248th report on the Bharatiya Saksh Bill 2023. The reports were presented to the Honorable Chairman Rajya Sabha on 10th number 2023 when the House was not in session, and forwarded to the Honorable Speaker Lok Sabha on the same day. Orders for the publication and circulation of the report were given by Honorable Chairman Rajya Sabha. Thank you, sir. Announcement. Honorable members, notices under Rule 267 received from Dr. John Britas, Sri P. Wilson, Sri Santosh Kumar P. and Sri Binoy Vishwam do not merit any admittance. Announcement 2. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Phulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Sri V. Vijay Sai Reddy, Sri Sukhendu Sekhar Rai, and Sri Kartikesh Sharma. Announcement 3. I have to inform honorable members that a letter has been received from Dr. D. Virender Hegde, member, stating that he is unable to attend the sittings of the current 262nd session of Rajya Sabha from 4th to 18 December 2023 due to his prior committed engagements. Does he have the permission of the House for remaining absent from 4th to 18 December 2023 during the current 262nd session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. Honorable members, announcement number 4. Based on the recommendations of the Business Advisory Committee, a procedure is in place that members who wish to speak in a debate should give their names to the table office not later than 30 minutes prior to the commencement of a debate with the approval of their party leader or whip. The procedure is also brought to the notice of the honorable members through issuance of a para in the Parliamentary Bulletin Part 2 before the commencement of every session. However, honorable members, it has been observed that during the course of debates, requests are received from the members from various parties to participate in such debates, and at times without the approval of their party leader or whip. This practice causes difficulty in regulating the speaking time of parties as well as individual members. Honorable members are accordingly requested to kindly adhere to the stipulated procedure and send their names for participation in a debate at least 30 minutes prior to its commencement through their party leader or whip. Matters raised with permission. Sri Dhananjay Bhimrao Mahadik. धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे महाराष्ट्र में 16 जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से फसलों के नुकसान के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। उपसभापति जी, महाराष्ट्र में प्रारंभिक नुकसान अनुमान के मुताबिक हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य भर में फसल की क्षति 1.3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने 3,93,325 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, इनमें से ठाणे,
पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बुल्डाना, अकोला, वासिम, यवतमाल और गढ़चिरौली के करीबन 96 तालुकाओं में बहुत बड़े पैमाने पे फसलों की हानि हुई है। प्रभावित फसलों में अंगूर, धान, केला, प्याज, सोयाबीन, कपास और गन्ना शामिल है। मैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आएगा 33% से अधिक क्षति पर जो मुआवजा तय किया गया है उन किसानों को, क्षतिग्रस्त किसानों को जल्द से जल्द मदद की जाए। धन्यवाद सर। श्री जगेश। Thank you, sir. I'll speak in my language. ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು MNCಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದ ಜನರನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಭಾಷೆಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद श्री जगेश जी. माननीय डॉक्टर फौजिया खान. Deputy Chairman, sir. Sir, the steep increase in screen time in early childhood years has become a growing concern in India. The advantage that technology has in education, entertainment and communication cannot be denied, sir. But it has been observed that very young children who are still in their early childhood years are spending more hours in front of screens than required. This has been found to have a negative impact on their various aspects of their personalities, their vision, their cognitive, their intellectual, emotional, social, and also physical development, sir. Most children are addicted to screens with
mobile phones playing the roles of babysitters in families. Sir, excessive screen time beyond approximately 1 hour daily links to behavioral problems and poorer vocabulary acquisition. The surge in screen-based technology usage among very young children has raised concerns about its impact on mental health and overall well-being. A study reveals a connection between increased screen exposure from 6 to 18 months of age and adverse outcomes including heightened emotional reactivity, aggression, externalizing behavior. Such addiction may also lead to attention deficit hyperactivity, which is called ADHD, sir, and low academic output. Additionally, findings suggest that elevated screen time at 4 years of age is linked to lower levels of emotional understanding at 6 years of age. These observations underscore the need for a balanced approach to technology use to safeguard the mental health of young children, sir. To address these concerns, a comprehensive strategy should be implemented. The development of a policy framework should prioritize setting permissible limits for screen time during educational activities as well. Parents need support in understanding the consequences and in managing the children's screen exposure, and this can be achieved through educational programs and resources that guide them on effective supervision. Additionally, sir, one more important point, workplaces should consider policies that enable parents to balance workloads and allocate dedicated time for their children, fostering a healthier balance between technology use and quality time in the family. Sir, this dual approach, combining educational reforms and supportive parental policies, aims to create a more conducive environment for the holistic development of children while acknowledging the role of technology in education. The greatest risk, sir, is that this increases the risk of online predators exploiting small children through child pornography and such, sir. The government must therefore pay attention to this critical issue. Thank you, Fauziya ji. Very important issue. Mani Sri Sandosh Kumar P. Thank you, Deputy Chairman, sir. I take this opportunity to demand the immediate release of rupees 5,352 crores center aid to the state of Kerala. It's the genuine share of the people of Kerala, and it is not anybody's generosity. And this amount includes 790 crores of rupees in the form of UGC pay revision, another 700 crores rupees for paddy procurement, and for healthcare it is 220 crores. So altogether it is 5,350 crores. And the state of Kerala properly submitted all the documents and made certain changes which were suggested by the central government. But even now, this huge amount is due to the state of Kerala. So I take this opportunity once again to demand the immediate release of the same. Moreover, sir, I would like to add one important thing, that the existing center-state financial relations must be redefined. According to the 15th Finance Commission, as it is rightly observed, states account for more than 62% of the total national expenditure. And these states are playing a major role in achieving the sustainable development goals. But whereas their income share is just 37%. This is a huge, glaring disparity, and this must be addressed within no time. And after the implementation of GST, states are also suffering with shortage of finance. So there is an immediate demand of revisiting, restructuring or redefining our center-state financial relations. Otherwise, we cannot achieve the sustainable development goals. And I request the union government, I demand the union government to take note of this. And let me add one more thing. Kerala as a state is the worst sufferer. 15th Finance Commission provided for just 1.9% of the central taxes for Kerala, whereas at the time of 10th Finance Commission, it was 3.9% of the central taxes.
So please note all these points and please redefine this center-state financial relations. Thank you. Thank you, Mani Sri Santosh Kumar. Please. Those who wants to associate, kindly send your names here. Mani Sri Sakti Singh Gohil ji. मैं एक गुजरात के मछुआरों का इश्यू आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूँ। हमारा गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ है। आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान की कैद में है। सर, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस की है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज फॉर 3 इयर्स। 3 साल से ज़्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी वो वहीं पे कैद में है। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा के ले जाती है और जब फिशिंग बोट्स वहाँ रहती है उसके अंदर से सारे पुर्जे उठा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। तो अगर वो फिशिंग बोट वापस भी आती है तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती है। इसी को चलते हमने कुछ चीज़ें मांग थी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम मिले और 3-4 चीज़ें की थी। मैं आपके ज़रिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पुनः शुरू किया जाए। एक हमने शुरू करवाया था कि यहाँ मछुआरा का फैमिली अगर डाक भेजेगा, खत लिखेगा तो उसे कैद में मिलेगा और कैद से मछुआरा जो पाकिस्तान की कैद में है वो अपने फैमिली को खत लिख सकता था। वो शुरू हुआ था, इस सरकार के रेजिम में वो बंद हो गया है। एक परिवार का बंदा किसी दुश्मन देश की कैद में है और उसके हालचाल भी परिवार नहीं जान सके, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हो, तो वो शुरू होना चाहिए। दूसरा हमने करवाया था, उस सरकार ने उस वक्त किया था कि जो भी मछुआरा फिशिंग बोट वहां गया और फिशिंग बोट वहां रख ली है तो उसके लोन की जो किस्तियां उसको रोक दिया जाता था और उसको सब्सिडी फिशिंग बोट के लिए दी जाती थी, वो भी आज शुरू नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी और वहां पे हुआ था पर राशि बहुत कम है कि जो भी कमाने वाला जो है वो तो चला गया कैद में और जनरली ये फिशिंग बोट में परिवार के जितने भी मेल मेंबर्स या कमाने वाले होते हैं वो साथ में होते हैं, वो चले जाते हैं, इधर सिर्फ बच्चे और महिलाएं बचती हैं, तो उनको कुछ सब्सिडीज मिलनी चाहिए। उस वक्त की सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए दी थी कि जीपीएस दिया कि जिसे मछुआरे को भी पता चले कि मैं अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं तो वो वापिस रहेगा। ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गुजरात गवर्नमेंट थी। C&AG ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैसे फिशरमैन की सेफ्टी के लिए दिए जीपीएस सिस्टम के लिए, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से जीपीएस का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार की ये राशि थी, C&AG ने कह दिया है तो हम तो मानते हैं कि बहुत सीरियस चीज है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए सीबीआई के जरिए। थैंक यू सर। माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी। Thank you, Chairman. Thank you, Deputy Chairman, for giving me the time to speak on an important issue of farmers who are custodians of traditional seed varieties. So, India had rich agrodiversity. Scientist Dr. Rajya had documented thousands of valuable paddy varieties which were evolved and selected by our ancestral farmers. Though Green Revolution paradigm eroded this rich agrodiversity wealth, our farmers continue to conserve some of them in their farms. Despite great logistical hardships and financial hardships, these farmers are conserving thousands of varieties of different crops. Some have been recognized with the Genome Savior Award, which is a welcome recognition for their contribution. We also need to remember the role of women farmers. So, government needs to identify and support such seed savers, train them for maintaining genetic purity of seeds, characterization and cataloging under a scheme providing infrastructure facilities and stipends. Surely, government will agree with me, sir, that desi seed varieties and the farmers who conserve them need support so that it can then become the basis for spread of organic and natural farming. Sir,
while George Fernandez, who led an aggressive campaign against the signing of GATT and WTO treaty, who was an inspiration for me. I am proud that in 2009, when the regulator GEAC approved BT Brinjal, it was again my party leader Nitish Kumar who opposed this. And the then Environment Minister, Mr. Jairam Ramesh, in 2010, ordered a moratorium on GM crops, which continues till the present government approved GM mustard last year, sir. In seed saving, natural and organic farming, I got trained by people like Dr. Debul Dev, who have conserved 1,400 paddy varieties, and Subhas Palekar, who makes Jivamrita out of desi cow dung, and the millet man of India, Dr. Khadar Wali, all of whom advocate desi seeds, sir. Two of them are recipients of Padma Awards by the present government. Each of them believe that there cannot be organic or natural farming without desi seeds. Definitely not GM crops. Thank you. Thank you, Mani Hegde ji. Manya Srimati Sangeeta Yadav ji. माननीय उपसभापति जी, आपने एसिड अटैक पीड़ितों की दुर्दशा के संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। युवा लड़कियों और महिलाओं पर एसिड हमला समकालीन भारतीय समाज की एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। यह एक ऐसा विषय है जो महिलाओं के दर्द से पीड़ित है और मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में 1500 एसिड हमले हुए हैं। इस जघन्य अपराध से बचे लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से भी पीड़ित हैं। वे आजीवन भेदभाव, कलंक और समाज से अलगाव का भी सामना करते हैं। वे पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई महिलाएं अपनी चोटों और अक्षमताओं के कारण काम करने और आजीविका कमाने में भी असमर्थ हो चुके हैं। मैं सरकार से एसिड हमलों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने और लड़कियों और महिलाओं को व्यापक समर्थन एवं सहायता प्रदान करने का आग्रह करती हूँ। मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिले, मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हो, उनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, उनको शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिले, साथ ही उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले और सामाजिक बदलाव के लिए भी हम कुछ अलग से प्रयास करें। सरकार से मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि तेजाब हमलों के मामले पर 226 विधि आयोग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को भी हमें तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు సార్. నా సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటిది ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్కు సంబంధించి జెన్యూన్గా పద్ధతి ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ను అనుసరించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ జరగవాలని చెప్పేసింది నా డిమాండు. దానిలో భాగంగా ఓటు హక్కు అనేటటువంటిది నిర్భయంగా వినియోగించుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం అవుతుంది. ఓటు హక్కు పరిపాలనా విధానానికి ఆయుధం వంటిది. ప్రజాస్వామ్యానికి దిక్చూచి అయిన అలాంటి ఓటు హక్కును కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా తొలగిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార పక్షం వారు ఓటర్లు తొలగించడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనపడుతున్నది. అలాగే ఓటర్ల కోసం ప్యారలల్గా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని చోట్ల ప్రాంతీయ సమాంతర వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీరాజ్ బదులు పంచాయతీ సచివాలయాలని, మున్సిపాలిటీలో గృహ సారథులని అనేక మందిని ఇట్లాంటి వాళ్ళను నియమించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ కార్యక్రమంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఓటర్లలో తొలగించు కార్యక్రమంలో భాగంగా చేస్తున్నారు. అది ముఖ్యంగా మా రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ జరుగుతున్నది. ఈ విషయంలో మాకు ఇంతకుముందు గతంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము. అలాగే ఉదాహరణకు
అనకాపల్లి పరిధిలో 70,000 ఓట్లు తీసివేశారు, నర్సీపట్నంలో 17,000 ఓట్లు తీశారు, మాడుగుల్లో 9,500 ఓట్లు తీసివేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే దాదాపు 10 లక్షల ఓట్లు గోల్మాల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. వాటిని సరిచేయలేదు ఈ రోజు వరకు. వాటిని సరిచేయమని చెప్పేసి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి, చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్కి, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లకి కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. వాటిని తొలగించడం కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం అది పార్లల్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిధులకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓట్లు తొలగిస్తున్నటువంటి వైనాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళినప్పటికీ కూడా సరిదిద్దనందువల్ల మేము ఈ రోజున పార్లమెంట్లో ఇక్కడ లేవదీయవలసి వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు వజ్రాయుధమైన ఓటు హక్కును పౌరులకు లేకుండా ఎన్నికల్లో దొడ్డిదారిని గెలవాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మొత్తానికి ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికైనా దృష్టి పెట్టి మేము చెప్పిన అవకతవకలపైన వీటిపైన సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎలిజిబుల్ ఓటర్లను చేర్పించాలని ఫారం 7 బల్క్గా ఇస్తూ ఓటర్లను తొలగించడానికి అధికార పార్టీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న సందర్భంలో వాటిని పరిశీలించి చేయాలని, తొలగించే ముందు ఓటర్కు నోటీసులు ఇవ్వాలని మేము ప్రత్యేకించి కోరుతున్నాము. దీనిపైన రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం దుర్వినియోగం చేస్తుంది కనుక వేరే రాష్ట్రాలను అధికారులను నియమించి थैंक यू. माननीय कनक महिला रविंद्र कुमार जी, स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो आपके कमेंट है एज पर रूल्स विल एग्जामिन वेदर इट विल गो और नॉट, प्लीज. माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी. Deputy Chairman, sir. Sir, the provisions for reservation were introduced in the Constitution of India to provide education and employment opportunities to the backward classes, that is BCs, so that they could be at par with others in the society, with other sections in the society. Sir, in fact, the Mandal Commission has recognized the BCs are historically marginalized and made recommendations to provide reservations for backward classes whose income is less than the mandated ceiling. Though the mandate other BCs whose income is higher than the mandated, the labeled mandated limit were excluded, and they are called as creamy layer and excluded from the reservation, sir. Sir, the creamy layer was introduced and it was first raised to 2.5 lakhs in 2004, revised to 4.5 lakhs in 2008, revised again to 6 lakhs in 2013, and last revision took place in 2017 at 8 lakhs per annum. Sir, the enhancement is done to adjust for the inflation once in 3 years. However, the existing limit for creamy layer has not been revised for the last 6 years. During this time, the inflation increased manifold. Applying 3-year formula, the revision of creamy layer limit is twice overdue till now, sir. The delay in revising the creamy layer limit has denied the reservations to many needy and deserving backward classes, that is BCs. There is an urgent need to revise the income criteria. The Ministry of Social Justice also recommended increase the limit from present 8 lakhs to 12 lakhs of rupees. Therefore, I strongly urge the Union government to revise the creamy layer limit and ensure that 3-year interval of revising the creamy layer limit is strictly adhered to. This will ensure the true social equality for all BCs in the country. Thank you very much, sir. Thank you, Vijay Sai Reddy ji. Mani Shri M. Muhammad Abdullah. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. This is my demand to reduce the beneficiary contribution of 10% while implementing Jal Jeevan Mission at villages with more than 50% of SC and or ST. Sir,
the Jal Jeevan Mission, a program of this government, and a crucial step towards achieving the United Nations Substantial Development Goal 6, which aims to ensure access to water and sanitation for all. Sir, what is the basic necessary for any lives? The good governance should ensure that all the citizens in India are getting access to water and sanitation. As per the government press release, 60% of the rural households, that is out of 20 crore, and 11.66 crore rural households are connected through functional household tap connection, and remaining 40%, that is approximately 9 crore households, yet to be connected, sir. Sir, the recent problem in this scheme is the revised beneficiary contribution. While launching this scheme, it is mentioned villages having more than 50% ST and ST population, where community contribution would be 5% of the capital cost. Recently, the ministry has increased the community contribution to 10% of the capital cost, and earlier it was 5% only. This has posed a difficulty in implementing the scheme now. Honorable Deputy Chairman, sir, SC/ST population in our country are the most marginalized and economically weaker section. Good governance should empathize their situation and devise the scheme and guideline in favor of the citizens. Increasing the beneficiary contribution for the villages with 50% or more SC and ST households had reduced the interest of the people to avail this scheme, and no wonder this will be the bottleneck for this scheme implementation. Sir, I humbly request the Honorable Minister via this August House to take necessary steps to reduce the beneficiary contribution at these said villages down to 5% or nil. Thank you, sir. Thank you, Mani Mohammed Abdullah ji. Mani Sri Balveer Singh ji, Sant Balveer Singh ji. बहुत-बहुत धन्यवाद उप सभापति जी, तुसी ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ पर्यावरण का पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण जिहड़ा सब तो मारू सिद्ध हो रहा, उहदे उत्ते असीं संसद का ध्यान दिवाउणा चाहुंदे हां। सो गुरु नानक पातशाह ने अज तो 500 साल तो वध समा पहला जो उपदेश दिता सी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत। अज सारा विश्व ता एनवायरमेंट के पोल्यूशन तो पीड़ित आ, उहदे विच जिहड़ा भारत दे विच बहुत वड्डा पोल्यूशन आ, जिहदे नाल बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा है वो जिहड़ा है देशवासियों का हो रहा। हवा के प्रदूषण कारण हर साल 21,08,000 मौतां जिहड़ियां हवा के पोल्यूशन करके हो जांदियां, जिहड़ी कि बहुत वड्डी गिणती है। इस हवा के पोल्यूशन के कारण जिहड़ियां हो रही मौतां। इस वेले जेकर हवा की जो गुणवत्ता की गल करिए तो दिल्ली दे विच सिर्फ साल दे विच एक दिन हवा जिहड़ी है वो नागरिकां नूं शुद्ध मिली है। बंबई दे विच 5 दिन ते चेन्नई दे विच 15 दिन साफ हवा जिहड़ी है वो साह लैण योग सी। बाकी सारा पोल्यूशन दे नाल जिहड़ा है सारे असीं मार चल रहे हैं। सो असीं ध्यान दिवाउणा चाहुंदे हां कि 2019 दे समय तो होने वाली मौतों के प्रदूषण कारण जिहड़ा विश्व की जिहड़ी हैगी है $37.8 बिलियन का नुकसान होया, जिहड़ी भारत की GDP का 1.37% कुल GDP का हिस्सा है। बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा है एयर पोल्यूशन के नाल हो रहा। ये हैरानी की गल ये है कि जदों एयर पोल्यूशन की गल आउंदी है तो सब तो वड्डा बलेम पंजाब के किसानों के उत्ते धर दिता जाता कि पंजाब के किसान पराली नूं अग लाउंदे आ तां पोल्यूशन आ, जदों कि पंजाब के पोल्यूशन का लैवल थल्ले हुंदा ते दिल्ली का पोल्यूशन जिहड़ा हैगा हाई लैवल ते हुंदा। पर कोई भी पंजाब का जिहड़ा किसान आ अपनी पराली नूं अग नहीं लाउणा चाहुंदा, क्योंकि हर कोई पोल्यूशन तो क्योंकि गुरु पातशाह का भै मनते हैं सारे। पर अफसोस है कि पंजाब सरकार ने पिछले साल एक सेंटर सरकार नूं सुझाव दिता सीगा कि जेकर इन्हां किसानां दी आर्थिक मदद की जाए तो ये जिहड़ा है पराली की अग नूं जिहड़ी लग रही है इनू रोकिया जा सकदा। 500 रुपया
पंजाब सरकार देगी, पंजाब 500 सरकार जिहड़ा है दिल्ली सरकार ते 1500 रुपया जिहड़ा है वो सेंटर सरकार देवे किसानां दी मदद की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय संतवलवीर जी 3 महीने का 3 मिनट का ही है ये 0 आवर, तो 3 मिनट, इसलिए उससे अधिक आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। प्लीज माननीय ऑनरेबल श्री पी विल्सन। Sir, there is an attempt to thrust the Uniform Civil Code by the Union government on the people of this country. The Uniform Civil Code proposes a unified set of personal laws applicable to all religions, which would govern marriage, divorce, inheritance and adoption. If the UCC is implemented, the current separate laws for Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Zoroastrians, Sikhs would be replaced by a common law. The question is whether the Union government is thinking of obliterating customs of all religions and kill secularism. India is a remarkably diverse country encompassing a wide range of religious, cultural and linguistic variations. Within Hinduism, numerous subcultures exist, each distinguished by its individual identity, traditions and customs. Imposing a single set of personal laws on all religions, subsects and denominations could potentially erode their distinctiveness and rich diversity. Sir, the first casualty of UCC would be the Hindu tribes, especially from states like Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka, who have a unique customs and traditions, who are all protected by Article 371, A to H of Constitution, and the UCC would destroy these constitutional guarantees. The second casualty is freedom of religion, guaranteed by Article 25 of the Indian Constitution, not only for minorities, but also for the majority religion. Additionally, Article 29, which protects the rights of the minorities to preserve and protect their distinct culture, will erode the unique culture and traditions of minorities. Thirdly, UCC would affect the advantages given to the Hindu undivided family in property and taxation laws. Most religious treat marriages as a holy sacrament. UCC will reduce it to a civil transaction like property transaction and will destroy the sanctity of these sacraments. Tying a thali or mangalsutra or taking 7 steps around the fire or performing Sirdhartha self-respect marriages introduced by Peraranger Anna will be wiped out by UCC. Already the 21st Law Commission, after 2 years of consultation, recommended not to bring UCC. The Constituent Assembly itself assured while enacting Article 44 that unless there is a consensus by all citizens of this country, the Uniform Civil Code should not be implemented. I would like to urge the Honourable Prime Minister through this August House that instead of thrusting a Uniform Civil Code that wipes out customs, we should adopt a rights-based approach to bring in equal rights for women, children and disadvantaged groups by encouraging dialogues, understanding and bring in gradual reforms within communities through social engineering to weed out undesirable practices. It is through these means that we can strike a balance between individual rights, freedoms and communal harmony. I thank the Deputy Chairman for giving me this opportunity. Sir, you should listen to us than shouting, sir. Thank you. Please, no. Mani Sri Dr. V. Sivadasan. Dr. B. Sivadasan, please. Please, nothing is going on record. Sir, please. Javakarji, please. Please. Mani Sri V. Sivadasan, please. Respected Chair. The painful incident has occurred in Silky You have to speak for 2 minutes because Mr. Sri Ajay Pratap Singh, Honorable Employee Associate. Sir, I am not here. Please speak for 2 minutes because Honorable Sri Ajay Pratap Singh will associate for 1 minute on the same issue. Yes, there is time, sir. Sir, the Silkyara tunnel incident, that is a very painful incident, sir. There, all security measures and the rule and norms are violated in that area. The company has violated, sir. Why this sad incident was happened? What was the inquiry report after the incident? Sir, this was not in the first time in that area. Earlier 17 times it was reported. The workers already told that. So the transparent inquiry, the fair inquiry is very necessary there. Sir, the entire world, and that day, 17 days, the 41 persons, 41 workers, they were in a tunnel. Sir, entire world was watched the incident. In that Silkyara tunnel, the security violations
lot of violations are sir. There was no safety exist. Basically, the plan, in the plan it was there, but really it was not there, sir. Then another thing, sir, the escape route was planned, but it was not it was not executed, sir. No trench gauges or safe tubes were not there, sir. Workers working in unprotected parts of the trench, so it should be ensured. The workers say that the hume pipes which were required per safety norms were not there, sir. This gross negligence of the part of the company, it should be ensured. Sir, the 59 Honorable Ajay Pratap Singh will associate on the same issue. Sir, Honorable Ajay Pratap Singh, please, on the same issue for 1 minute. Please, please. आप लोग प्लीज, आपको मालूम है कि जो एसोसिएट करते हैं उन्हें 1 मिनट और जो मुख्य बोलने वाले होते हैं उन्हें 2 मिनट सेम इशू पर. दिस हैज बीन द प्रैक्टिस. प्लीज, यस, ऑन द सेम टाइम, सेम इशू, 3 मिनट्स प्लीज. आप बोलें. माननीय उपसभापति महोदय, हमारे साथी पी शिवदासन जी ने जिस विषय का उल्लेख किया है उस विषय के संदर्भ में उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में पहले दिन पहला कदम रखा था तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और इस घटना ने यह दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको चरितार्थ करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय को, जनरल रिटायर्ड श्री वीके सिंह जी को और इस बचाव कार्य से जुड़े हुए सभी तकनीकविद, सभी सलाहकार, सभी रेड माइनर्स और सभी पक्षों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इस बचाव कार्य को संपन्न कराया है और सारे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है. प्लीज प्लीज प्लीज. ऑनरेबल श्री एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, माननीय एब्सेंट, माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी, माननीय श्री अयोध्या रामी, माननीय एडी सिंह, प्लीज प्लीज. प्रियंका जी प्लीज प्लीज सिट. आपका नाम नहीं है लिस्ट में. इट्स नॉट एक्सेप्टेड. इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड. नो. माननीय एडी सिंह, माननीय एडी सिंह, यू स्पीक. दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड. आप बोले, आप बोले, बोले, आप बोले. The National Green, प्लीज, माननीय श्री एडी सिंह जी, प्लीज स्पीक. The National Green Tribunal in 2014 banned all diesel vehicles. Please, nothing is going on record. Shri A.D. Singh ji, please. Priyanka ji, do not obstruct. Please, your name is not here. Please. Older than 10 years and petrol ones older than 15 years. The ministry has also issued a notification in 2023 for deregistration and scrapping all vehicles owned by the central and state government that do not comply with NGT order. Delhi government has issued orders for deregistration and scrapping vessels. Further, we know that older vessels are at risk to road safety, consumes more fuel and pollute the environment. To tackle the problem, the government has come out with a vehicle scrapping policy. Under this scheme, the persons opting for scrapping the vessels get incentive in the form of reduced registration fee and road taxes besides the incentives from the auto industry. As per government estimate, at present there are more than 1 crore vehicles that are required to be deregistered and scrapped across the country, for which government has approved 70 registered vehicle scrapping facility, out of which 38 are operational. However, the situation on the ground level, particularly in NCR, is totally different. There are lakhs of vehicles, including government vehicles plying which have reached the 10 years diesel and 15 years 10 years petrol and 15 years diesel mark, adding to the cause of pollution. The whole purpose of NGT order and the government efforts are defeated by this omission on the part of the concerned department to take action. It is high time that all end-of-life vehicles should be deregistered and scrapped. Thank you.
Thank you. Manish, please. Manya Priyanka ji, your issue is a state subject. It has been not allowed. Please, it's not going on record. Please. Manya Shri Ajodhya Rami Reddy, not present. Shri Niranjan Vishi, Honorable Shri Niranjan Vishi, not present. Honorable Shri Vaiko, yes, you have given your issue. It's on concern for frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lanka Navy. You have given a subject for... Please. Sri Vaiko, please. You do not want to speak? So, Honorable Sri Alaram Karim ji, your issue is there. Mani Sri Alaram Karim, need to increase share of central government in various important government schemes like PMAY, etc. Please. Sir, Mr. Chairman, sir. I have submitted an important issue related with the financial position of Kerala. My colleague Santosh presented here that matter. With the development activities and other things, Kerala is facing acute shortage of finance. Sir, we request the Government of India to revisit the Financial Commission's definitions and the principle of fund allocations. Now, our borrowing limit is drastically reduced. And some public sector companies, those who have taken loan for their purpose, it is also calculated as state borrowing. So that is a unfair practice. So far, such attitude was not taken against any state. Government of India's public sector, certain departments, particularly National Highway Authority, has taken huge loan. It is not calculated as the loan of Government of India. So these principles are to be revisited. And also the amount spent by the state towards land acquisition for National Highway, that is also introduced, taken by, borrowed by the KIFBI, the company constituted by the company. It is also calculated as a state borrowing. That is to be exempted from that calculation. And the decision... Question hour now. Question hour. Honorable members, the multimedia devices, MMDs, may not display the list of questions due to some technical glitch. Though it will be resolved very soon, the mics of honorable members may be switched off for a moment to reboot the system. Honorable members may kindly bear with the inconvenience. So now question hour. Those of the members who have an impression about it, I would be happy to receive them in my chamber and discuss the matter today itself. Question number 1, Shri Kartikeya Sharma. Question number 1. Shri Kartikeya Sharma. Honorable Chairman, sir, through you, I'd like to ask the Honorable question number 1, please. Honorable Minister, Honorable Member Shri Kartikeya Sharma, Supplementary 1. Thank you, Chairman, sir. So I'd like to ask the Honorable Minister if the Ministry is considering to take any steps to safeguard the rights and the interests of the passengers of airlines, just like the rights of airlines and airline crews are defined. As there have been many instances
that have come to light where passengers are mistreated, and especially older people and people who are first-time flyers coming from rural areas. So, in the name of safety and procedure, if the government and the ministry is planning... Be pointed. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उड़ान योजना पर, और आपके द्वारा मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहता हूं कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि आखिरी शहर तक हम नागर विमानन क्षेत्र को हम जोड़ पाए, और पूरे देश में बहुत विस्तार हुआ है। 517 रूट्स वर्तमान में प्रचलित हैं, और इस उड़ान योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। एक नया उड़ान का सफर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कल के दिवस में भी हो पाया है, और इस सफर को हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी ले जाएंगे। दूसरे राज्यों में इसका विश्वास भी हम सदन को देना चाहते हैं। जहां तक प्रश्न कार्तिकेय जी ने आज इस सदन में पूछा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं नागर विमानन मंत्रालय से कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है। सिक्योरिटी के लिए हमारी संस्था बीकैस, ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अपनी तगड़ी निगरानी सारे एयरपोर्ट्स पे रखती है, और सेफ्टी के लिए डीजीसीए जो हमारी संस्था है, हर एक एयरलाइन और हर एक एयरपोर्ट के लिए कार जो सिविल एविएशन रूल होते हैं उसे इशू करती है, ताकि हमारे यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनकी सुगमता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जो मुद्दा उन्हें उठाया है, कोई भी मिसट्रीटमेंट किसी भी पैसेंजर के साथ होगा जिसकी सूचना मंत्रालय को मिलती है, फौरन उस एयरलाइन या उस एयरपोर्ट दोनों को सूचित किया जाता है, जवाब लिया जाता है, और जहां कोई भी एयरलाइन या एयरपोर्ट दोषी पाया जाए, पेनल्टी मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से फिक्स की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री कार्तिकेय शर्मा। Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask the Honourable Minister whether the Ministry has considered opening of or increasing the number of pilot training institutes in the country given the increase in demand in the aviation sector. Honourable Minister. सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्तिकेय जी ने उठाया है। हमारा नागर विमानन क्षेत्र की विस्तारता आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम प्रचलित हो पा रहे हैं। हमने इस संख्या को दुगना से ज्यादा कर दिया है 9.5 वर्षों में, और हमारी प्राथमिकता है कि इसे हम आगे जाके बढ़ाएं। हमारे एयरलाइंस की भी पूर्ण क्षमता आगे बढ़ने वाली है। एयर इंडिया ने 470 प्लेन की ऑर्डर डाली है, इंडिगो ने 500 प्लेन्स की ऑर्डर डाली है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को एक बैकबोन आवागमन के क्षेत्र में पूरे देश का हम बनाने वाले हैं। ये विश्वास मैं सदन में आपके द्वारा मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the Udan scheme has been designed to make air travel more accessible to common man. But there are problems in bidding process, and that is why we are not able to operate the way we should be in remote areas, sir. Nanded Airport is an airport which was constructed because the Sikh communities have a sacred place there. But Nanded Airport is not functional. I had written to the minister, and he very kindly replied to me saying that Nanded Airport would be available for bidding in the list of underserved airports. And if any airline submits a valid bid for the routes connecting Nanded, the same shall be considered as per the provisions of the scheme document. Sir, I want to know what happened about the Nanded Airport flights, because that's the flight we take to come to Delhi. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने मेरे साथ पत्रचार इस विषय पर किया है, और हमारे सलाहकार समिति में भी ये विषय उठी है। प्रश्न यहाँ है कि एयरलाइंस ने भी नांदेड़ में प्रचलन शुरू कर दिया था,
कुछ एयरलाइंस जो इकोनॉमिक रिटर्न नहीं हो पा रही थी तो वहाँ थोड़े फ्लाइट्स कम हो गए थे, पर नांदेड़ को कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वो इसलिए केवल नहीं क्योंकि नांदेड़ एक प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, पर हमारे सिख समाज के लिए भी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान नांदेड़ है। कठिनाई इस विषय में एयरलाइंस के तरफ से नहीं है अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इस क्षेत्र में नांदेड़ एयरपोर्ट के साथ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है, और ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, जिस एंटिटी ने आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फीस को भी रीएम्बर्स नहीं किया। जो ATCOs हमने वहाँ लगाई थी उनको भी हमें विड्रॉ करनी पड़ी, और जो उड़ान के 5.0 राउंड बिडिंग थी, नांदेड़ टू पुणे, हिंडन, बैंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, गोवा और पटना और आदमपुर के रूट्स भी हमने अवार्ड किए। मैं प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार और उनके साथ चर्चा भी कर रहा हूं, और हमारी यही सोच है कि वो एयरपोर्ट वापस अगर प्रदेश सरकार ले पाए, उसे प्रचलित कर पाए, तो फिर उस एयरपोर्ट्स पे हम लोग वो रूट्स की शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा हमारे सांसद महोदय को भी कि इस एफर्ट पे हमें भी मदद करें, और अगर ये एयरपोर्ट वापस लिया जाए और महाराष्ट्र सरकार अपने अधीन कर पाए और उसे ऑपरेट कर पाए, तो फिर ये रूट्स हम वहाँ प्रचलित कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री वी विजय साई रेड्डी। So close and so far. No, close only. Sir, according to the CAG report, under Udan scheme, only 54 routes or 7% of the awarded routes managed to sustain the operations beyond 3 years concession period. Sir, can the government explain what steps are being taken to resolve the problem in respect of the other routes unable to finish their concession period? Honorable Minister. Sir, Vijay Sai Reddy ji, as always, has raised a very erudite question, and I shall endeavor to try and satisfy him. In every situation, sir, you can always look at a glass half full or a glass half empty. Vijay Sai Reddy ji proposes to look at it from a half empty viewpoint. We in government look at it from a half full viewpoint. These were routes and airports that had been wiped off the civil aviation map. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi ji that today under Udan Yojana, 76 airports that were never on the civil aviation map of India in its history have today reappeared on those maps. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi and the government that today 1.30 lakh passengers have travelled through Udan Yojana who could never ever dream of travelling on a plane before. It is only because of his vision that today 2.75 lakh flights have operated in India due to the viability gap funding that has been proposed and given by the central government for this scheme in particular. And it is only because of his vision that the northeast that was looked at as always Purvottar, the furthest point of India, from the periphery has been brought into the mainstream. And 9 new airports have been constructed in the northeast of India, of which 6 have been possible only because of the Udan scheme. As far as his question is concerned, I'd like to correct his data. This scheme has been proposed as a VGF scheme for 3 years, where viability gap funding is given for 3 years for an airline. We hope that post that, the route sustains itself. If it doesn't, then we have to look for new routes to add on to these schemes. That's why we have a target of 1,000 routes over the period of the scheme. Today, 517 routes have been operational. His data is slightly dated because he relies on the CAG report. The current data, I'd like to correct him,
is 78 routes are still continuing after 3 years. 40% of the routes are operational, 15% of those are continuing after 3 years, and it is our endeavor that as India grows, as people grow accustomed to air travel, this will only increase in the days to come. Our projection is that from 144 million travelers in 1920, by the year 2030, India will have 42 crore travelers by civil aviation in the days to come. Sri Rajiv Shukla, fifth supplementary. मंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत तमाम कनेक्टिविटी तो बनवाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसिलेशन लास्ट मिनट पे जो होता है फ्लाइट्स का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। एक, उनको लोड नहीं मिलता, इस वजह से जो एयरलाइंस है तुरंत लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन कर देती है। दूसरे, अभी फॉग आ गया है, और इसमें जो है कैंसिलेशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय उठा रही है सरकार, अगर बताने की कृपा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जवाब विस्तार में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पहले से ही। ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने उड़ान योजना के साथ नहीं, लेकिन समूचे नागर विमानन क्षेत्र के साथ प्रश्न उठाया है। जहां तक कैंसिलेशंस का सवाल है, हम लोगों के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके आधार पर अगर कैंसिलेशन होती है 1-2 घंटे फ्लाइट के पहले, तो एयरलाइन को पैसेंजर्स के लिए इमीडिएट कनेक्टिंग फ्लाइट का प्रावधान करना पड़ता है। अगर 5-6 घंटे के लिए फ्लाइट नहीं मिल पाती तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है पैसेंजर्स को होटल का कमरा देना, उनका रिफंड देना, उनको अगले फ्लाइट पर लगाना। तो ये नियम कार के आधार पर, सिविल एविएशन रूल्स के आधार पर निर्धारित है मंत्रालय के द्वारा। अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो मंत्रालय पूर्ण सतर्कता के साथ उस एयरलाइन के विरुद्ध प्रक्रिया और कार्रवाई इमीडिएटली करती है। जहां तक फॉग का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजीव जी का, जो इस प्रश्न के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। फॉग एक ऐसा माहौल है जिस पर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं रख पाते किस दिन फॉग आएगा नहीं आएगा। इसलिए 2021 में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दिया गया था, जुलाई के माह में नवंबर के लिए फॉग रूटीन के लिए हमने एक नई प्रचलन शुरू की। उसके 3-4 भाग थे। पहले तो हमारे कैट 1, कैट 2 और कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या एयरलाइंस को में बढ़ोतरी होने के लिए हमने उनको सीधा प्रावधान बनाने को कहा। उसी के साथ जो कैट 2 और कैट 3 ट्रेन्ड एयरक्राफ्ट न हो, उदाहरण के तौर पर ATR और Q400 बॉम्बार्डियर के, उनको हमने नॉन फॉग आवर्स में चलाने का प्रावधान हमारे विंटर स्केड्यूल में हमने पहले से बना के रखा है। विंटर स्केड्यूल करीब अक्टूबर के अंत के माह में बनता है, वो प्रावधान हमने बना के रखा है। पूरा विंटर स्केड्यूल में हर एक एयरलाइन का स्केड्यूल भी उसी फॉग के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कैट 3 एयरपोर्ट्स, IFR एयरपोर्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रेटेड एयरपोर्ट्स को कैट 1 पर हम लोग ले जा रहे हैं। कैट 1 के एयरपोर्ट्स को कैट 2 तक ले जा रहे हैं। कैट 2 के एयरपोर्ट्स को कैट 3 तक ले जा रहे हैं। फॉग से प्रभावित हमारे देश में करीब 18 से 19 एयरपोर्ट्स ही हैं। उसमें उत्तर भारत के भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है जहां से राजीव जी आते हैं, हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, और इन एयरपोर्ट्स में भी प्रावधान कैट 3 का हमने कर दिया है। और इसी के तहत पिछले 20-21 वर्ष के विंटर स्केड्यूल में और 21-22 के विंटर स्केड्यूल में फॉग के जरिए कैंसिलेशंस 0.05% ही केवल हो पाए हैं और डिलेज 0.01% ही हो पाए हैं, क्योंकि वो स्केड्यूल ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की है। कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या भी बहुत देश में बढ़ गई है, और कैट 2 और कैट 3 की भी, ताकि हर प्लेन का ऑपरेशन बोइंग 737, A319, A320 कैट 2-3 ट्रेन पायलट्स के आधार पे ही हो। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीमती मौसम नूर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, श्रीमती मौसम नूर।
Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, the source of arsenic in groundwater has been traced to the drainage pattern of Ganga-Brahmaputra Delta. And since water quality in interstate rivers are under Central Pollution Control Board, my question is, what concrete steps have been taken to solve this problem? Honorable Minister. धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न करने का मुझे सदन के सामने अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आज़ादी के बाद से लेकर के 2019 तक जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, देश में पीने के पानी की क्वालिटी को जांचने के लेकर, मापने को लेकर के कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जल शक्ति अब जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के बाद में देश भर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक तरफ जहां देश के सभी घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। और जो काम प्रारंभ हुआ 2019 से लेकर के अब तक जो 16% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी जाता था, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज देश के 71% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है। और पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है, इसके कारण से माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम कल देखा आपने कि प्रचंड बहुमत के साथ में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये जो पीने के पानी की गुणवत्ता और आर्सेनिक के को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, देश भर में 2016 में 14,143 ऐसे हैबिटेशन थे। माननीय सदस्य सही है कि इंडो गैंगेटिक जोन में आर्सेनिक की समस्या है। 14,183 क्षेत्रों में हैबिटेशंस में इस तरह की चुनौती थी, जो 2017 तक बढ़कर के 18,258 हैबिटेशंस हो गए थे, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है, पानी की लेवल्स को लेकर के, विड्रॉल को लेकर के इस तरह के परिवर्तन आते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जल शक्ति जल जीवन मिशन प्रारंभ करने के बाद में जिस तरह का परिणाम आया है, उसके चलते हुए आज इनकी संख्या निरंतर घटी है। मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि 2017 से जो हमने नेशनल वाटर क्वालिटी मिशन में जो प्रायोरिटी ऐसे अफेक्टेड हैबिटेशंस को देना प्रारंभ किया था, वहां से लेकर के जल जीवन मिशन तक आज देश में एक भी ऐसा हैबिटेशन नहीं है जहां पर व्यक्ति को सेफ पीने का पानी, आर्सेनिक मुक्त पीने का पानी उपलब्ध न हो। देश के जो है इन 18,258 हैबिटेशंस में से केवल 378 हैबिटेशन ऐसे बचे हैं, जिनमें से 319 पंजाब में है और 59 वेस्ट बंगाल में, जहां जो है कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था देश में नहीं थी माननीय सभापति महोदय, कि देश में पीने का पानी जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय, उसको जांचने का कोई किसी तरह का जो है देश में व्यवस्था ही नहीं थी। आज देश में हम खुशी के साथ में कह सकते हैं कि 2111 लेबोरेटरीज देश भर में काम कर रही, जिसमें से 1300 से ज्यादा लेबोरेटरीज NABL एक्रेडिटेड है। और माननीय चेयरमैन साहब, देश भर में 19-20 तक जहां केवल 50 लाख टेस्ट कुल मिलाकर के होते थे पीने का पानी की गुणवत्ता को जांचने का, ये जो व्यवस्था हमने की और देश भर में 23 लाख महिलाओं को ट्रेन करके जो फील्ड टेस्टिंग किट दिए, लेबोरेटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ में पिछले वर्ष में देश में 1,73,00,000 से ज्यादा पीने के पानी के टेस्ट हुए हैं। और उसके गुणवत्ता को तुरंत जो है, अगर उसमें कोई एडवर्सिटी मिलती है, केवल आर्सेनिक नहीं, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई एडवर्सिटी है तो इसको इमीडिएटली एड्रेस करने की व्यवस्था हमने की है। साथ ही साथ में हम अपनी वेबसाइट पे एक सिटीजन्स कॉर्नर भी इस तरह से खड़ा कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था हम करने वाले हैं ताकि देश में तुरंत इस तरह की गुणवत्ता के विषय पर समाधान हो सके। लेकिन माननीय सदस्य जिस प्रांत से आती हैं, मैं बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य से कहूंगा कि अपने प्रांत में उस विषय पर बात करें। आज देश में, पूरे देश में केवल एकमात्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बचा है जो आज भी 40% से नीचे जल जीवन मिशन पर है। उस पर गति बढ़ाने की नितांत रूप से आवश्यकता है, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती मौसम नूर। Sir, I would request the Honorable Minister to give a specific answer on what is the total financial investment made by the Ministry in establishing community water purification as part of the arsenic mitigation efforts. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, हमने क्वालिटी को
प्रायोरिटी देते हुए जहां क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस हैं, जो जल जीवन मिशन का जो फंड एलोकेशन का जो हमने बेंचमार्क बनाया है, उसमें क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज को 15% का प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के क्वालिटी को लेकर के चैलेंजेस और इश्यूज हैं। राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से ऊपर उपबंध करती हैं और कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अलग अलग तरह के जो है प्रदूषण को लेकर के उसके मिटिगेशन के लिए अलग अलग तरह के उपबंध उसके लिए किए जाने की आवश्यकता होती है। Honorable Minister, it's a very pointed question. I know, I'm replying so direct pointedly. response. She wished to understand about, she wished to know about the community water treatment water plant to mitigate the arsenic. मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि इसकी सूचना राज्य सरकार से मंगवा करके हम जो है माननीय सभा सदस्य को शीघ्र भेज देंगे। The Honorable Minister would get in touch with the Honorable Member to get all the details he wants. Supplementary, Dr. Fozia Khan. I'm so surprised. Sir, according to the risk of antimicrobial resistance, this is a significant global concern today. This issue extends beyond medical overuse, encompassing factors like water contamination from the pharmaceutical industry. Water waste treatment plants are pivotal in addressing AMR, which is a big concern. They serve as reservoirs and sources of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic-resistant genes. So recognizing various sources as potential routes for AMR spread, including recreational water, specifically in the rural areas, sir, in light of these challenges, what proposals or initiatives has the ministry put forth or intends to propose to prevent water seepage into this declining groundwater? Additionally, are there steps taken to monitor the levels of AMR in groundwater? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मैंने अपने पहले प्रश्न के जवाब में भी कहा है कि भारत में इस तरह का कोई प्रोटोकॉल और व्यवस्था ही पहले नहीं थी कि पीने के पानी की जांच की जा सके, और व्यवस्था न होने के चलते हुए सामान्यतया शहरी परिवेश में लोग अपने घर में इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और आरओ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाध्य थे। लेकिन क्योंकि इस तरह की व्यवस्था अब खड़ी की और पहली बार देश में सारे बेसिक पैरामीटर्स पर और सारे जो है सेकेंडरी पैरामीटर्स पर टेस्टिंग की व्यवस्था खड़ी हुई है, देश की सरकार इस पर अपनी दृष्टिकोण से निरंतर निगरानी बनाए रखती है। लेकिन क्योंकि पीने का पानी और इसके अंतर पानी जो है वो राज्य सरकारों का विषय है, तो प्राथमिक रूप से इस विषय पर काम करने की, इस विषय पर निगरानी रखने की जो है वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय पर राज्य सरकारों के सहयोग के लिए तत्परता के साथ में खड़ी है। Well, I can appreciate monitoring of the Honorable Minister. His team came to me. I put them to a very strict test about my own village, my own house, and inquired, is there a null there? They could give details of my entire village. Question number 3, Sri Irana Kadadi. Honorable Minister, first supplementary. धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार भूजल स्तर और पानी के प्रदूषण के आकलन के लिए तकनीक का प्रयोग करके पूरे देश में तालुका स्तर पर भूजल सेंसर्स का एक नेटवर्क बनाने का क्या प्रावधान करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन साहब, नितांत गिरता हुआ भूजल का स्तर हमारे देश के लिए अत्यंत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि भूगर्भ के जल पर निर्भरता दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की, और हमारी कुल मिलाकर के विड्रॉल जो है वो दुनिया में हम सर्वाधिक करते हैं। 25% दुनिया के विड्रॉल का अकेला हम भारत में करते हैं। हमारे पीछे खड़े हुए पंक्ति में अमेरिका और चाइना दोनों को अगर साथ जोड़ दें तो उनका भी 1.5 गुना पानी हम विड्रॉल करते थे, और उसके चलते हुए निरंतर भूगर्भ का जल हमारा जो है वो कम हो रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके हर एक प्लेटफॉर्म पर इस पर से बात करना प्रारंभ किया, पंचायतों के सरपंचों को चिट्ठी लिखने से लेकर के जिस तरह से डिफरेंट इनिशिएटिव्स उनके लीडरशिप में लिए गए,
और उसके कारण से एक जल चेतना का व्याप जो हुआ है, उसके चलते हुए भारत सरकार के जल शक्ति अभियान, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए अमृत सरोवर अभियान और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने जिस तरह से अपने अपने यहाँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने अपने यहाँ पे गुजरात में जो इनिशिएटिव्स लिए थे, चाहे महाराष्ट्र की सरकार ने जो जल युक्त शिविर प्रारंभ किए, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश में हुई, इस तरह की सारी योजनाओं के चलते हुए अब भूगर्भ का जल का स्तर जो है वो बढ़ने लगा है। मैं माननीय सभी सदस्यों के माध्यम से देश को बहुत प्रसन्नता के साथ में ये विषय सूचित करना चाहता हूँ। ये 2019 से पहले जब जल शक्ति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री के रूप में बनाया, उससे पहले देश में कभी 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी 5 साल में भूगर्भ के जल को मापने के लिए जो देश भर में नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क के माध्यम से एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी और 3-3, 4-4 साल बाद में जो रिपोर्ट पब्लिश होती थी वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती थी, क्योंकि 3-4 साल में जो है उसके ऊपर कोई उसमें बहुत सारा और एडवर्स इंपैक्ट हो जाता था। लेकिन पिछले वर्षों में पहले हमने 2 साल पर किया और पिछले साल से अब हम प्रतिवर्ष जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित करने की क्षमता हमने डेवलप की है। और मैं इसके साथ ही अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कहना चाहता हूं कि 2023 में 2020 के बाद में जो डाउनवर्ड्स हमारा हमेशा घटता हुआ भूगर्भ जल का आंकड़ा आता था, जो 6000 से ज्यादा ब्लॉक्स में मॉनिटर करते थे, हर साल हमारे क्रिटिकल जो है ब्लॉक्स, सेमी क्रिटिकल और जो है ब्लॉक्स और ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। पिछले 4-5 साल के परिणाम हुए कि अब जो है पिछले साल में 2023 की तुलना में, अगर 22 की तुलना में अगर मैं बात करूं तो 2023 की रिपोर्ट जो हमने 3 दिन पहले पब्लिश की है, आज उसके चलते हुए सेफ जोन जो है सेमी क्रिटिकल से सेफ जोन ऐसे 127 जोन है। ओवर एक्सप्लॉइट से क्रिटिकल की तरफ आकर के पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, ऐसा ओवर जो है 27 ब्लॉक्स हैं, सेमी क्रिटिकल से सेफ हुए 127 ब्लॉक हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेफ हो गए ऐसा 1 ब्लॉक है, और ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेमी क्रिटिकल हुए ऐसे 4 ब्लॉक्स हैं। इस तरह से 224 ब्लॉक्स में पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो देश में आया है, जबकि गिरने का स्तर जो है वो 130 ही ब्लॉक्स में हुआ है। तो निश्चित रूप से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है प्रगति इस दिशा में हुई है और इस दिशा में राज्य सरकारों ने, इस दिशा में भारत सरकार ने जिस तरह से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को प्राथमिकता देकर के एमजी नरेगा के फंड को डिप्लॉय किया, जल शक्ति अभियान के माध्यम से उसके बीच में एक कोहेरेंस डेवलप किया और उसके साथ साथ में अटल भूजल योजना के माध्यम से हमने जिस तरह से पहली बार देश में, जहां हमेशा ही हम सप्लाई साइड इंटरवेंशंस पे काम कर रहे थे, पहली बार हमने देश में जो है वो डिमांड साइड इंटरवेंशंस पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। उसका परिणाम ये होने लगा है कि अब पानी की जो है एक्सट्रैक्शन जो था, वो एक्सट्रैक्शन भी जो पहले 63% हम ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो घट करके अब 59.26% पर पहुंचा है। और मैं आप सब माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में जल का ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के साथ साथ में ग्राउंड वाटर के दोहन को डिमोटिवेट करने के लिए भी आप सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब के समन्वित प्रयास आने वाली पीढ़ी को जो है एक जल सुरक्षित ऐसा जीवन प्रदान कर पाएगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री ईराना कडाडी। सर, गिरते भूजल स्तर के बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक उपयोगी माध्यम है। हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ाने देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सोलर पैनल लगाने हेतु परिवारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता या सब्सिडी दी जाती है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देने हेतु परिवारों या हाउसिंग सोसाइटी को किसी प्रकार की सब्सिडी या केंद्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना शुरू करने के बारे में विचार कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, माननीय सदस्य ने जो विषय सामने रखा है, मैंने अपने उत्तर में कहा था कि भारत सरकार के ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल को प्राथमिकता देते हुए नरेगा कर होने वाले एक्सपेंडिचर का 65% हिस्सा केवल नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए उपयोग और प्राथमिकता से पानी पर उपयोग किया जाए, इसका प्रबंध किया है। क्योंकि उस पैसे का खर्च करने के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, इसलिए प्राथमिकता को राज्य सरकार पे उस पर काम करना चाहिए। मैं मेरे प्रदेश का उदाहरण देके कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं और आप दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं, कि हमारे प्रदेश में जो है
व्यक्ति अपने घर में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए। और मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूं, हमारी अनेक पीढ़ियों ने पीने का पानी जो है हमेशा ही रेन वाटर को कलेक्ट करके ही उपयोग किया है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए नरेगा के माध्यम से हम सहयोग प्रदान करते हैं, सब्सिडी सरकार प्रदान करती है। अन्य राज्य भी इस तरह का इनिशिएटिव लें तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है। लेकिन बड़े स्तर, व्यापक स्तर पर मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जब देश सम्मान के साथ में आजादी का 75वां वर्ष मना रहा था, तब देश के हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर ऐसे बने, नए तालाब बनाए जाएं या बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए पुराने तालाबों को हम जो है उनका सुदृढ़ीकरण कर सकें। इस दृष्टिकोण से जो इनिशिएटिव लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि 75 ऐसे जो है जिलों में तालाब बने। और लेकिन जिस तरह का उत्साह धरातल पर दिखा, हम ये मानते थे कि लगभग 50,000 तालाब ऐसे बनेंगे, नए बनेंगे या सुदृढ़ीकरण होगा। आज देश भर में 1 लाख से ज्यादा ऐसे तालाबों पर काम हुआ है। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए माननीय चेयरमैन साहब, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा मॉडल स्टेट ऑफ कर्नाटका ने, जिस प्रदेश से आते हैं, पिछली सरकार ने लिया था कि बेंगलोर शहर के सारे गंदे पानी को सेकेंडरी लेवल पर ट्रीट करके उन्होंने चिकबेलापुर, कोलार और बेंगलोर रूरल, इन तीनों जिलों के ऐसे लगभग 229 टैंक्स को पानी से, उस ट्रीटेड पानी से भरना प्रारंभ किया है। और उसके कारण से लगभग जो है 9 टीएमसी पानी उन टैंक्स में जाता है। और उसके कारण से पूरे बेंगलोर के आसपास के क्षेत्र के ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है। जहां पानी की उपलब्धता 1400 फुट तक चली गई थी नीचे, वो घट करके आज 100-150 फुट पर आई है। निश्चित रूप से एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस पर हम सब लोग जो है इनिशिएटिव लेकर के अपने राज्यों में भी अगर इसको कराते हैं तो ये एक तरफ पीने के पानी के सोर्सेज को स्टेबलाइज करेगा, खेती के लिए पानी को स्टेबलाइज करेगा, और साथ साथ में जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए एक बहुत व्यापक उसके कारण से प्रभाव हो सकता है। थर्ड सप्लीमेंट्री, अयोध्या रामी रेड्डी। The Minister provide an assessment of the impact of artificial structures for groundwater recharge in Andhra Pradesh and share plans for scaling or modifying these efforts based on observed outcomes. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने एक निवेदन किया कि क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को ही इसमें इनिशिएटिव लेकर के अपने प्लान्स बना करके और अपने योजनाओं को धरातल पर उतारना है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसके लिए जो है वो सहयोग करने के लिए, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस पर निवेश करने के लिए, जैसी योजना का प्रारूप है उस पर हमेशा ही उसके लिए जो है वो आगे बढ़ करके काम करने के लिए आतुर। फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the government aims to double ethanol blending in petrol by 2025. However, challenges are recently being faced in the ethanol supply chain, including disruptions in the rice supply. This is impacting ethanol manufacture, and projections are a 3.3% fall in sugar production. Honorable Member. Sorry, sir. You had given me supplementary for question number 3. Okay, sir, I'm sorry. No, it does happen sometimes. I was not paying attention. Sir, India is the largest global user of groundwater, extracting 4.92 billion cubic meters annually, with 63% of Indian districts experiencing declining groundwater levels. This decline is directly correlated with higher poverty rates, estimated to be 9% to 10% higher in areas where groundwater tables fall below 8 meters. In light of this given situation, what specific measures has the ministry undertaken to identify regions at risk of low groundwater levels? And additionally, what initiatives has the ministry taken to raise awareness among farmers about the challenges associated with excessive groundwater use, considering the invisible nature of groundwater and the potential for unscientific extraction and over-exploitation? Honorable Minister. हालांकि मैंने अपने पहले प्रश्न के मूल प्रश्न के उत्तर में बहुत विस्तार के साथ में इस विषय पर उत्तर दिया था
कि प्राथमिक रूप से ये राज्य सरकारों का दायित्व है, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को लेकर के, ग्राउंड वाटर की बदलती हुई परिस्थितियों को लेकर के, मुझे लगता है माननीय सदस्य का उस समय उनके संज्ञान में नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यान नहीं दिया इज एक्सपंस्ड। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10 साल में जिस तरह से प्रारंभ से लेकर अब तक इस विषय को लेकर के जन चेतना का जागरण किया है, आज उसके चलते हुए निश्चित रूप से जो है उसका प्रभाव ग्राउंड वाटर पे रिचार्ज जिस तरह से बढ़ा है उस पर हुआ है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि अटल भूजल योजना के माध्यम से हमने पहली बार देश में सप्लाई साइड से इतर हट करके जो है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करना प्रारंभ किया है। उसका प्रभाव भी अब ऐसे 7 प्रांत जहां चुनौती ज्यादा बड़ी थी वहां दिखाई देने लगा है। मैं एक उदाहरण माननीय चेयरमैन साहब आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर जो है स्थानीय सरकार किसी शहर की तय करती है और वो अगर ग्राउंड वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज, रिचार्ज एक्टिविटीज पर काम करे। मेरे प्रदेश में डूंगरपुर एक शहर है जहां बहुत बड़ा तालाब आपके संज्ञान में आप जो है शहर के बीच में लेक होती थी जो सूख करके फुटबॉल का मैदान बन गई थी, क्योंकि पानी आज विज्ञान मानता है और 5000 साल पहले की भी हमारे जो है जो लेखों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जमीन का पानी, सतह का पानी, जमीन के भीतर का पानी और नदियों का पानी सब आपस में कोरिलेटेड है। तो वहां पानी, क्योंकि जमीन का पानी विड्रॉल ज्यादा हो रहा था इसलिए वहां की लेक सूख गई थी। वहां के स्थानीय नगर पालिका ने यह तय किया और तय करके हर एक घर की छत के ऊपर होने वाले रेन वाटर को डायरेक्टली ड्राइड अप हैंडपंप्स के साथ में जोड़ा, एक छोटा सा फिल्टर लगा करके, और जब उस पर काम करना प्रारंभ किया तो वहां का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि आज उस लेक में जो है बढ़िया नौकायन किया जा सकता है। इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर सब राज्यों में, सभी शहरों में लिए जाएं तो उसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसमें मैं एक कॉशन भी रखना चाहता हूं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्टिविटीज के साथ में सेफ्टी को भी सब लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता हो, ताकि सेफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। हम एक्विफर्स को इस जल्दबाजी में कहीं कंटामिनेट न करें, लेकिन निश्चित रूप से इस दिशा में अगर समन्वित प्रयास होते हैं तो हम एक बहुत बेहतर भविष्य इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्री पवित्र मार्गेरिटा। Honorable Minister. Statement is laid on the table of the House. Supplementary 1, Shri Pavitra Margeta. Yes, sir. My first supplementary is that the state of Assam has been producing oil for the last century. And now the question is that how the people of Assam, the state of Assam, are getting benefit resulting from the oil production in the state of Assam along with the CSR activities in our state. Honorable Minister. Sir, I'm particularly pleased that the honourable member has asked this question about the history of oil exploration in the state of Assam and its current state. I'm happy, sir, because Assam is the state where all this began. In fact, sir, it was in the year 1886 that the first oil well was dug at a place called Digboy. And sir, the name Digboy is also very interesting because, as you will recall, sir, 1886, we were under the domination, governance of an alien dispensation, and it was the white master who was shouting, "Dig, boy." So from that Dig Boy came the Digboy oil wells, 1886, 1889. Sir, the first commercial scale oil well was produced and oil extracted. I think it was 200 or 20,000 gallons per day at Digboy, 1889, sir. And in 1901, the first refinery in Asia, not in India, but in Asia, came up in Digboy, sir. So I'm very happy, sir, because today we've come a long distance from there. Today, the state of Assam produces 4.2 million metric tons of crude oil, which accounts for something like 14.38% of the total crude oil produced in the country. Equally, the state of Assam produces 3.6 BCM, billion cubic meters of natural gas, which accounts for 10.43
of the country's natural gas production. Sir, it is axiomatic that whenever oil is stuck in any state, both the state government, the state revenues, the people of the state benefit from it, and equally the country as a whole benefits from it. Oil and natural gas and other forms of energy which we are producing, biofuels, compressed biogas, soon green hydrogen, they will all contribute to our enhancing our energy mix and to save precious amounts of foreign exchange on account of importation. On the crude oil front, sir, we are, because the economy is booming, is growing. Last quarter, sir, 7.6%. Overall, everybody estimates we'll have a rate of growth of over 6.5%. We still import 85% of our crude oil and, sir, about 50% of our gas. The state of Assam, sir, in the year 2019 to 20 and 2022 to 23, the state government's revenues from the production of natural gas, and every state government gets revenues from energy production, it was 9,291.17 crores for the revenues which accrued from the production of crude oil, sir, and 851.28 crores respectively, sir, from natural gas. Sir, these are the revenues which came on account of the royalties that the state government got. But, sir, there are other attendant benefits which also accrue. For instance, there is economic activity, both direct, indirect employment creation. There are thousands of local people get jobs. Sir, and I've been Minister for Oil and Petroleum and Natural Gas only for 2.5 years or so. I can say that different states would like now to enter the energy ecosystem because there is revenue for the state, there is employment for the people, etc. Sir, I think the honourable member also asked about the CSR which accrues from this kind of activity. Sir, I'm going to check the overall figure, but I do remember that recently I was in Assam where I had the privilege of inaugurating a hospital which has been made by CSR funds, Corporate Social Responsibility Funds, by ONGC. This is a hospital in Shivsagar, sir, and it cost 483 crores. Sir, the total amount of CSR activity which has come to the state of Assam from 2014 to 23 as a result of this is 1,600 crores which has been spent by the oil and gas PSUs on CSR activity. And one hospital alone which has CT scan, MRI, modular, OT facilities, 483 crores. So, but the beauty of it is this is a hospital situated somewhere and it will cover a vast catchment area. Large number of other adjoining districts will also benefit from it. So the answer, sir, which I now have, the figure is 1,600 crores for the period between 2014 and 23. Honorable Minister, you have been in this seat for 2.5 years. We have had in the country 8 governments that didn't have this period also. I was part of one. Second supplementary, Sri Pavitra Margarita. Thank Pradhan Mantri Narendra Modi ji for earmarking and investing more than 40,000 crore rupees in the oil sector in Assam. My question is, second supplementary question to Honorable Ministers, is that what are the major projects are undertaken right at this moment in the state of Assam in the field of oil sector by the PSUs, especially the city gas connection and ethanol production, etc. Honorable Minister. Particularly pleased that the honourable member has chosen to ask this question because particularly after 2014 there has been an acceleration and more so in the last few years of the kind of projects which have been undertaken by the oil and gas PSUs or as OMCs as we call them. Sir, amongst the various major projects with overall project cost, these are about 44,000 crores as the honourable member says. Out of this, sir, Numaligarh refinery expansion project itself is about 18,968 crores. The Northeast gas grid is 9,265 crores.
The Paradeep-Numaligarh crude oil pipeline is another 9,058 crores, and the NRLS, that is Numaligarh biorefinery, is another 4,200 crores, sir. Sir, these are the projects which have already been sanctioned and where work is going on. The second component of the question related to ethanol. Sir, on ethanol as well, as the honorable member and others would be aware, sir, our ethanol or biofuels blending up to 2014 was about 1.5%. Sir, I was personally involved in the efforts which were made earlier. We had decided, rather the government of that day had decided that they wanted 5% ethanol blending in at least 10 or 15 of our states and union territories. But with the best efforts in the world, sir, we didn't proceed beyond 1.4, 1.5% for a variety of reasons. I think in order to succeed in ethanol blending, you need to put in place an ecosystem which will make it viable both for the feed providers, for the production of ethanol and for its use. Today, sir, I'm very happy we had a target of 10% blending by November 2022. We were able to achieve that target 5 months in advance. Our second target, sir, was 20% ethanol blending by 2030. The Honorable Prime Minister, because of the success of this and his leading up front, we were able to bring that target of 2030 to 2025. Today we are in a situation, sir, we are already doing 12% blending. We will achieve the 20% blending 5 years in advance. For that we need 1,000 crore litres, and sir, we are already at about 580 or 600 crore litres. Insofar as Assam is concerned, sir, the oil marketing companies have signed 7 long-term offtake agreements for setting up dedicated ethanol plants with total production capacity of 1,150 kiloliters per day. The total financial outlay of these projects, sir, is 1,370 crore. In addition, sir, NRL is setting up a commercial 2G ethanol plant at Numaligarh, which is expected to be commissioned by 2024, that is next year. The capacity of this plant is 185 kiloliters per day, and its feedstock will be bamboo. The project cost, sir, is 4,200 crores. Sir, I would like to conclude my response to this supplementary by saying one of the most reassuring and heartwarming aspects of our biofuel program is that we have gone from this traditional sugarcane-based feedstock thing to now second generation, that is to make ethanol from agricultural waste, parali, to make ethanol from bamboo, and Assam is leading the way in the production of 2G from bamboo, sir. Supplementary 3, Virender Prasad Basse. Your Thank you, Honorable Chairman, sir. Thankful to Honorable Minister to give him the detailed history of Assam oil producing state. Thank you, sir. You are very right. Asia's first refinery was established in Digboi, Assam, and it was built by British rule. Sir, direct question. Sir, I'm coming to the question, sir. Assam is an oil producing state. It is known to you, sir. When British was ruled Assam and India, at that time, Digboi refinery was established, sir. But after long back, sir, when Congress was ruled in our country, to get a refinery in Assam, when India got freedom, we have to fight, we have to come to street, and we got the refinery in Guwahati, a mini refinery whose production capacity only below 1 million tons. But when this Narendra Modi government is coming, this government has taken lots of initiative, and now they have invested more than 80,000 in Numaligarh. Please ask your supplementary. Yes, Numaligarh refinery, 86,000. We are thankful to the Honorable Minister. Sir, by producing oil, Assam is getting royalty from the Union government. India is a oil deficit state, sir. We are importing crude oil from the abroad, sir. Now I'd like to know from Honorable Minister, is Government of India seriously thinking about the increase of the
royalty of crude oil production which compare with the international? Honorable Minister. Very happy that the honourable member has decided through this supplementary to go deeper into the issue of earnings. And he wants serious response. And I'm going to give him a serious response with serious underline. With serious underline. Sir, the earnings of a state come from a variety of aspects of the ecosystem dealing with energy. Royalty is one aspect. Yes, as we increase our capacity, as more oil gets produced, as more oil gets refined, as the refinery expands. By the way, refinery expansion, we have currently 252 million metric tons per annum. We are going to take it up to 400. The Honorable Prime Minister met 450. So when you refine more, you'll get more royalty, without any doubt. But there are other aspects to this earning also. For instance, when we were able to complete 10% of biofuel blending by 2022, 5 months in advance, we were able to save 41,400 crores of rupees from the import bill. That enabled us to give 42,400 to our farmers. When we do 20% blending, it will be even more. Insofar as the state of Assam is concerned, I am not serious. I'm 100% sure that with the efforts which are being made to expand capacity, the efforts which are being made to produce and refine more, we just did an expansion of one of the Honorable Chief Minister tied me down in a public meeting. I agreed. We are expanding that refining capacity. So the more royalty will come definitely. But the issue is, there is more potential, including in other states of the Northeast. In fact, there is one issue between Assam and another state where there are some issues which we need to resolve. I myself feel that perhaps we have not exercised our, within quotes, our margin of persuasion, because oil is something, if you dig it somewhere, somebody, your neighbor may say, ki aap to nikal rahe oil, to hamari field se aa raha. We need to resolve these issues. But as I see this issue developing, the developments which have taken place, the expansion, the earlier honorable member also from Assam, he spoke about 44,000 crores, but that is now, even more is going to come. And I'm sure I can sit down with the honorable member you can, as the representative of the people, tell the state government, I have an excellent rapport with your chief minister, with the other chief ministers. We are all working towards enhancing both the oil production, natural gas production, which will ultimately benefit both the people of the northeastern states and their union. Sir. Fourth supplementary, Kamakhya Prasad Tasa. सर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। क्या वो विस्तृत से इसका आंसर दिया। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ओएनजीसी ऑयल, इसका प्रोडक्शन कितना है और प्राइवेटाइजेशन कितना ऑयल फील्ड को क्या हुआ है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन देने का मतलब है उन लोग का प्रोडक्शन, उन लोग को सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओएनजीसी और ऑयल को क्या इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ने दिया? ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, the petroleum and natural gas sector has the benefit of both the private sector in exploration and production, and it also has the our OMCs, the marketing companies. Sir, how much is produced? I think we already have in the body of the answer, sir, I have stated that the production of crude oil in India, million metric ton, just now is 29.2 million metric tons. Sir, oil typically, oil and gas, these are capital intensive sectors which have a large gestation period. Now, very often in the past, and I'm not looking at anyone or pointing fingers at anyone, when crucial decisions on investment could not be taken because there was this counter point of view that instead of putting in so much of capital expenditure, you're probably better off importing a cheap oil. Then of late there has been this other narrative, sir, which has emanated from the climate change discussions, the transition to sustainability. Globally, the investment in traditional fossil fuel, the entire system has dropped. But I can assure you, sir, we are doing things differently. There's now a concerted attempt, along with the international oil companies with which we have signed the MOUs, our own
OMCs, they're all collaborating, and we now have a situation where hopefully this figure of 29.2 million metric tons, I hope that by the time, whoever is the minister at that stage from the BJP government, after 2029, he will be able to give a figure with the multiplier of that, because I'm sure, I'm confident that the work which has been set up now and the exploration and production, all the incentives we've taken. To give you one example, sir, we have about 3.5 million square kilometers of sedimentary basin. But we never, for some reason I don't understand, we never exploited more than 6 to 7%. We are now taking this 6 to 7% exploitation of the sedimentary basin to double the amount. And the answer to the question, the body of the answer provides, in fact, specific details on what have been done in that, and I'll read out to the honourable member. It says specifically that we are taking increase the net geographical area under exploration from 2.5 lakh square kilometers to 5 lakh square kilometers. This plus the opening up of 1 million square kilometers, which used to be part of the no-go areas for a variety of reasons. Sir, and it's only the Honorable Prime Minister who could have taken this decision to free this up from resident objections of security agencies, defense ministry, etc. Today we are in the situation, we are looking at towards the period ahead where this figure of 29.2 million metric tons will be much higher, and that we will be able to reduce our import dependence even as our consumption is increasing. Shri Santosh Kumar P. Explaining the improvements made in this field. So may I know, will the government take any initiative to control the petroleum and natural gas prices? Honourable Minister. The honourable member has asked this. There are two ways of controlling prices, and clearly the model that we have been following, we have ensured that in the last 2 years, prices of petrol in India have come down by 11%, and of diesel, they've also come down, but by a smaller amount. Why have we been able to do it, sir? Because the central government, because of the initiative and decision of the Prime Minister, we reduced central government excise on 2 occasions, in November 21 and in May 2022, and we brought down the price by 13 and 16 Question rupees. number 5, Mr. Shri Binoy Vishwam. Question number 5. Honourable Member, question number 5. Shri Binoy Vishwam. I raise it. Honourable Minister. Yes, sir. Yes. Honourable Minister. Sir, reply is laid on the table of the House, sir. The House will meet again at 2 p.m. today. Will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Secretary General. Kind permission, I rise to lay on the table a copy of the Constitution 128th Amendment Bill 2023, passed by the House of Parliament during 261st session of Rajya Sabha and assented to by the President. Shri Rao Sahib Dada Rao Danve. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhattji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 5 in today's revised list of business. Reports
of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, Sri Brajlal. Thank you, Chairman, sir. I rise to present the following three reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Number 1, 246th report on Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Second, 247th report on Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023 and 248th report on the Bharatiya Saksh Bill 2023. The reports were presented to the Honorable Chairman Rajya Sabha on 10th number 2023 when the House was not in session and forwarded to the Honorable Speaker Lok Sabha on the same day. Orders for the publication and circulation of the report were given by Honorable Chairman Rajya Sabha. Thank you, sir. Announcement. Honorable members, notices under Rule 267 received from Dr. John Britas, Sri P. Wilson, Sri Santosh Kumar P. and Sri Binoy Vishwam do not merit any admittance. Announcement 2. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Phulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Sri V. Vijay Sai Reddy, Sri Sukhendu Sekhar Rai, and Sri Kartikesh Sharma. Announcement 3. I have to inform honorable members that a letter has been received from Dr. D. Virender Hegde, member stating that he is unable to attend the sittings of the current 262nd session of Rajya Sabha from 4th to 18 December 2023 due to his prior committed engagements. Does he have the permission of the House for remaining absent from 4th to 18 December 2023 during the current 262nd session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. Honorable members, announcement number 4. Based on the recommendations of the Business Advisory Committee, a procedure is in place that members who wish to speak in a debate should give their names to the table office not later than 30 minutes prior to the commencement of a debate with the approval of their party leader or whip. The procedure is also brought to the notice of the honorable members through issuance of a para in the Parliamentary Bulletin Part 2 before the commencement of every session. However, honorable members, it has been observed that during the course of debates, requests are received from the members from various parties to participate in such debates, and at times without the approval of their party leader or whip. This practice causes difficulty in regulating the speaking time of parties as well as individual members. Honorable members are accordingly requested to kindly adhere to the stipulated procedure and send their names for participation in a debate at least 30 minutes prior to its commencement through their party leader or whip. Matters raised with permission. Sri Dhananjay Bhimrao Mahadik. धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे महाराष्ट्र में 16 जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से
फसलों के नुकसान के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। उपसभापति जी, महाराष्ट्र में प्रारंभिक नुकसान अनुमान के मुताबिक हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य भर में फसल की क्षति 1.3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने 3,93,325 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, इनमें से ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बुल्डाना, अकोला, वासिम, यवतमाल और गढ़चिरौली के करीबन 96 तालुकाओं में बहुत बड़े पैमाने पे फसलों की हानि हुई है। प्रभावित फसलों में अंगूर, धान, केला, प्याज, सोयाबीन, कपास और गन्ना शामिल है। मैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आएगा, 33% से अधिक क्षति पर जो मुआवजा तय किया गया है, उन किसानों को, क्षतिग्रस्त किसानों को जल्द से जल्द मदद की जाए। धन्यवाद सर। श्री जगेश। Thank you, sir. I'll speak in my language. ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು MNCಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದ ಜನರನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಭಾಷೆಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद श्री जगेश जी। माननीय डॉक्टर फौजिया खान। Deputy Chairman, sir. Sir, the steep increase in screen time in early childhood years has become a growing concern in India.
The advantage that technology has in education, entertainment and communication cannot be denied, sir. But it has been observed that very young children who are still in their early childhood years are spending more hours in front of screens than required. This has been found to have a negative impact on their various aspects of their personalities, their vision, their cognitive, their intellectual, emotional, social, and also physical development, sir. Most children are addicted to screens, with mobile phones playing the roles of babysitters in families. Sir, excessive screen time beyond approximately 1 hour daily links to behavioral problems and poorer vocabulary acquisition. The surge in screen-based technology usage among very young children has raised concerns about its impact on mental health and overall well-being. A study reveals a connection between increased screen exposure from 6 to 18 months of age and adverse outcomes, including heightened emotional reactivity, aggression, externalizing behavior. Such addiction may also lead to attention deficit hyperactivity, which is called ADHD, sir, and low academic output. Additionally, findings suggest that elevated screen time at 4 years of age is linked to lower levels of emotional understanding at 6 years of age. These observations underscore the need for a balanced approach to technology use to safeguard the mental health of young children, sir. To address these concerns, a comprehensive strategy should be implemented. The development of a policy framework should prioritize setting permissible limits for screen time during educational activities as well. Parents need support in understanding the consequences and in managing the children's screen exposure, and this can be achieved through educational programs and resources that guide them on effective supervision. Additionally, sir, one more important point, workplaces should consider policies that enable parents to balance workloads and allocate dedicated time for their children, fostering a healthier balance between technology use and quality time in the family. Sir, this dual approach, combining educational reforms and supportive parental policies, aims to create a more conducive environment for the holistic development of children while acknowledging the role of technology in education. The greatest risk, sir, is that this increases the risk of online predators exploiting small children through child pornography and sites, sir. The government must therefore pay attention to this critical issue. Thank you, Fauziya ji. Very important issue. Mani Sri Santosh Kumar P. Thank you, Deputy Chairman, sir. I take this opportunity to demand the immediate release of rupees 5,352 crores centrate to the state of Kerala. It's the genuine share of the people of Kerala, and it is not anybody's generosity. And this amount includes 790 crores of rupees in the form of UGC pay revision, another 700 crores rupees for paddy procurement, and for healthcare it is 220 crores. So altogether it is 5,350 crores. And the state of Kerala properly submitted all the documents and made certain changes which were suggested by the central government. But even now, this huge amount is due to the state of Kerala. So I take this opportunity once again to demand the immediate release of the same. Moreover, sir, I would like to add one important thing, that the existing center-state financial relations must be redefined. According to the 15th Finance Commission, as it is rightly observed, states account for more than 62% of the total national expenditure. And these states are playing a major role in achieving the sustainable development goals. But whereas their income share is just 37%. This is a huge, glaring disparity, and this must be addressed within no time. And after the implementation of GST, states are also suffering with shortage of finance. So there is an immediate demand of revisiting, restructuring or redefining
our center-state financial relations. Otherwise, we cannot achieve the sustainable development goals. And I request the union government, I demand the union government to take note of this. And let me add one more thing. Kerala as a state is the worst sufferer. 15th Finance Commission provided for just 1.9% of the central taxes for Kerala, whereas at the time of 10th Finance Commission, it was 3.9% of the central taxes. So please note all these points and please redefine these center-state financial relations. Thank you. Thank you, Manisi Santosh Kumar. Please. Those who want to associate, kindly send your names here. Mani Shri Sakti Singh Gohil ji. मैं एक गुजरात के मछुआरों का इश्यू आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूँ। हमारा गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ है। आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान की कैद में है। सर, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस की है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज फॉर 3 इयर्स। 3 साल से ज़्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी वो वहीं पे कैद में है। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा के ले जाती है और जब फिशिंग बोट्स वहाँ रहती है उसके अंदर से सारे फुर्जे उठा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। तो अगर वो फिशिंग बोट वापस भी आती है तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती है। इसी को चलते हमने कुछ चीज़ें मांग थी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम मिले और 3-4 चीज़ें की थी। मैं आपके ज़रिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पुनः शुरू किया जाए। एक हमने शुरू करवाया था कि यहाँ मछुआरा का फैमिली अगर डाक भेजेगा, खत लिखेगा तो उसे कैद में मिलेगा और कैद से मछुआरा जो पाकिस्तान की कैद में है वो अपने फैमिली को खत लिख सकता था। वो शुरू हुआ था, इस सरकार के रेजिम में वो बंद हो गया है। एक परिवार का बंदा किसी दुश्मन देश की कैद में है और उसके हालचाल भी परिवार नहीं जान सके, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हो। तो वो शुरू होना चाहिए। दूसरा हमने करवाया था, उस सरकार ने उस वक्त किया था कि जो भी मछुआरा फिशिंग बोट वहां गया और फिशिंग बोट वहां रख ली है तो उसके लोन की जो किस्तियां उसको रोक दिया जाता था और उसको सब्सिडी फिशिंग बोट के लिए दी जाती थी। वो भी आज शुरू नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी और वहां पे हुआ था पर राशि बहुत कम है कि जो भी कमाने वाला जो है वो तो चला गया कैद में और जनरली ये फिशिंग बोट में परिवार के जितने भी मेल मेंबर्स या कमाने वाले होते हैं वो साथ में होते हैं, वो चले जाते हैं, इधर सिर्फ बच्चे और महिलाएं बचती हैं। तो उनको कुछ सब्सिडीज मिलनी चाहिए। उस वक्त की सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए दी थी कि जीपीएस दिया कि जिसे मछुआरे को भी पता चले कि मैं अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं तो वो वापस रहेगा। ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गुजरात गवर्नमेंट थी। C&AG ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैसे फिशरमैन की सेफ्टी के लिए दिए, जीपीएस सिस्टम के लिए, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से जीपीएस का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार की ये राशि थी, C&AG ने कह दिया है तो हम तो मानते हैं कि बहुत सीरियस चीज है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए सीबीआई के जरिए। थैंक यू सर। माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी। Thank you, Chairman. Thank you, Deputy Chairman, for giving me the time to speak on an important issue of farmers who are custodians of traditional seed varieties. So, India had rich agrodiversity. Scientist Dr. Rajya had documented thousands of valuable paddy varieties which were evolved and selected by our ancestral farmers. Though Green Revolution paradigm eroded this rich agrodiversity wealth, our farmers continue to conserve some of them in their farms. Despite great logistical hardships and financial hardships, these farmers are conserving thousands of varieties of different crops. Some have been recognized with the Genome Savior Award, which is a welcome recognition for their contribution.
we also need to remember the role of women farmers. So government needs to identify and support such seed savers, train them for maintaining genetic purity of seeds, characterization and cataloging under a scheme providing infrastructure facilities and stipends. Surely government will agree with me, sir, that desi seed varieties and the farmers who conserve them need support so that it can then become the basis for spread of organic and natural farming. Sir, while George Fernandez, who led an aggressive campaign against the signing of GATT and WTO treaty, who was an inspiration for me, I am proud that in 2009, when the regulator GEAC approved BT brinjal, it was again my party leader Nitish Kumar who opposed this. And the then Environment Minister, Mr. Jairam Ramesh, in 2010, ordered a moratorium on GM crops, which continues till the present government approved GM mustard last year, sir. In seed saving, natural and organic farming, I got trained by people like Dr. Debul Dev, who have conserved 1,400 paddy varieties, and Subhas Palekar, who makes Jivamrita out of desi cow dung, and the millet man of India, Dr. Khadar Wali, all of whom advocate desi seeds, sir. Two of them are recipients of Padma Awards by the present government. Each of them believe that there cannot be organic or natural farming without desi seeds. Definitely not GM crops. Thank you. Thank you, Mani Hegde ji. Manya Srimati Sangeeta Yadav ji. माननीय उपसभापति जी, आपने एसिड अटैक पीड़ितों की दुर्दशा के संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। युवा लड़कियों और महिलाओं पर एसिड हमला समकालीन भारतीय समाज की एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। यह एक ऐसा विषय है जो महिलाओं के दर्द से पीड़ित है और मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में 1500 एसिड हमले हुए हैं। इस जघन्य अपराध से बचे लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से भी पीड़ित हैं। वे आजीवन भेदभाव, कलंक और समाज से अलगाव का भी सामना करते हैं। वे पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई महिलाएं अपनी चोटों और अक्षमताओं के कारण काम करने और आजीविका कमाने में भी असमर्थ हो चुके हैं। मैं सरकार से एसिड हमलों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने और लड़कियों और महिलाओं को व्यापक समर्थन एवं सहायता प्रदान करने का आग्रह करती हूं। मैं यह भी निवेदन करती हूं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिले, मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हो, उनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, उनको शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिले, साथ ही उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले और सामाजिक बदलाव के लिए भी हम कुछ अलग से प्रयास करें। सरकार से मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि तेजाब हमलों के मामले पर 226 विधि आयोग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को भी हमें तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు సార్. నా సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటిది ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్కు సంబంధించి జెన్యూన్గా పద్ధతి ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ను అనుసరించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ జరగాలని చెప్పింది నా డిమాండ్. దానిలో భాగంగా ఓటు హక్కు అనేటటువంటిది నిర్భయంగా వినియోగించుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం అవుతుంది. ఓటు హక్కు పరిపాలనా విధానానికి ఆయుధం వంటిది. ప్రజాస్వామ్యానికి దిక్సూచి అయిన అలాంటి ఓటు హక్కును కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా తొలగిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార పక్షం వారు ఓటర్లు తొలగించడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనపడుతున్నది. అలాగే ఓటర్ల కోసం
ప్యారలల్గా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని చోట్ల ప్రాంతీయ సమాంతర వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీరాజ్ బదులు పంచాయతీ సచివాలయాలని, మున్సిపాలిటీలో గృహ సారథులని అనేక మందిని ఇట్లాంటి వాళ్ళను నియమించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ కార్యక్రమంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఓటర్లలో తొలగించు కార్యక్రమంలో భాగంగా చేస్తున్నారు. అది ముఖ్యంగా మాకు మా రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ జరుగుతున్నది. ఈ విషయంలో మాకు ఇంతకుముందు గతంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము. అలాగే ఉదాహరణకు అనకాపల్లి పరిధిలో 70,000 ఓట్లు తీసివేశారు, నర్సీపట్నంలో 17,000 ఓట్లు తీశారు, మాడుగుల్లో 9,500 ఓట్లు తీసివేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే దాదాపు 10 లక్షల ఓట్లు గోల్మాల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. వాటిని సరిచేయలేదు ఈ రోజు వరకు. వాటిని సరిచేయమని చెప్పేసి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి, చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్కి, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లకి కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. వాటిని తొలగించడం కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం ప్యారలల్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిధులకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓట్లు తొలగిస్తున్నటువంటి వైనాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళినప్పటికీ కూడా సరిదిద్దనందువల్ల మేము ఈ రోజున పార్లమెంట్లో ఇక్కడ లేవదీయవలసి వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు వజ్రాయుధమైన ఓటు హక్కును పౌరులకు లేకుండా ఎన్నికల్లో దొడ్డిదారిని గెలవాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మొత్తానికి ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికైనా దృష్టి పెట్టి మేము చెప్పిన అవకతవకల పైన వీటిపైన సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎలిజిబుల్ ఓటర్లను చేర్పించాలని ఫారం 7 బల్క్గా ఇస్తూ ఓటర్లను తొలగించడానికి అధికార పార్టీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న సందర్భంలో వాటిని పరిశీలించి చేయాలని, తొలగించే ముందు ఓటర్కు నోటీసులు ఇవ్వాలని మేము ప్రత్యేకించి కోరుతున్నాము. దీనిపైన రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం దుర్వినియోగం చేస్తుంది కనుక వేరే రాష్ట్రాలను అధికారులను నియమించి थैंक यू. माननीय कनक महिला रविंद्र कुमार जी, स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो आपके कमेंट हैं एज पर रूल्स विल एग्जामिन वेदर इट विल गो और नॉट. प्लीज. माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी. Deputy Chairman, sir. Sir, the provisions for reservation were introduced in the Constitution of India to provide education and employment opportunities to the backward classes, that is BCs, so that they could be at par with others in the society, with other sections in the society. Sir, in fact, the Mandal Commission has recognized the BCs are historically marginalized and made recommendations to provide reservations for backward classes whose income is less than the mandated ceiling. Though the mandate other BCs whose income is higher than the mandated, the labeled mandated limit were excluded, and they are called as creamy layer and excluded from the reservation, sir. Sir, the creamy layer was introduced and it was first raised to 2.5 lakhs in 2004, revised to 4.5 lakhs in 2008, revised again to 6 lakhs in 2013, and last revision took place in 2017 at 8 lakhs per annum. Sir, the enhancement is done to adjust for the inflation once in 3 years. However, the existing limit for creamy layer has not been revised for the last 6 years. During this time, the inflation increased manifold. Applying 3-year formula, the revision of creamy layer limit is twice overdue till now, sir. The delay in revising the creamy layer limit has denied the reservations to many needy and deserving backward classes, that is BCs. There is an urgent need to revise the income criteria. The Ministry of Social Justice also recommended increase the limit from present 8 lakhs to 12 lakhs of rupees. Therefore, I strongly urge the Union government to revise the creamy layer limit
and ensure that three-year interval of revising the creamy layer limit is strictly adhered to. This will ensure the true social equality for all BCs in the country. Thank you very much, sir. Thank you, Vijay Sai Reddy ji. Mani Sri M. Muhammad Abdullah. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. This is my demand to reduce the beneficiary contribution of 10% while implementing Jal Jeevan Mission at villages with more than 50% of SC and or ST. Sir, the Jal Jeevan Mission, a program of this government and a crucial step towards achieving the United Nations Substantial Development Goal 6, which aims to ensure access to water and sanitation for all. Sir, what is the basic necessary for any lives? The good governance should ensure that all the citizens in India are getting access to water and sanitation. As per the government press release, 60% of the rural households, that is out of 20 crore, and 11.66 crore rural households are connected through functional household tap connection, and remaining 40%, that is approximately 9 crore households, yet to be connected, sir. Sir, the recent problem in this scheme is the revised beneficiary contribution. While launching this scheme, it is mentioned villages having more than 50% ST and ST population, where community contribution would be 5% of the capital cost. Recently, the ministry has increased the community contribution to 10% of the capital cost, and earlier it was 5% only. This has posed a difficulty in implementing the scheme now. Honorable Deputy Chairman, sir, SC/ST population in our country are the most marginalized and economically weaker section. Good governance should empathize their situation and devise the scheme and guideline in favor of the citizens. Increasing the beneficiary contribution for the villages with 50% or more SC and ST households had reduced the interest of the people to avail this scheme, and no wonder this will be the bottleneck for this scheme implementation. Sir, I humbly request the Honorable Minister via this August House to take necessary steps to reduce the beneficiary contribution at these said villages down to 5% or nil. Thank you, sir. Thank you, Mani M. Muhammad Abdullah ji. Mani Sri Balveer Singh ji, Sant Balveer Singh ji. बहुत धन्यवाद उप सभापति जी, तुसी आपां ने समा दिता। सो अज असीं पर्यावरण का पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण जिहड़ा सब तो मारू सिद्ध हो रहा, उहदे उत्ते असीं संसद का ध्यान दिवाउणा चाहुंदे हां। सो गुरु नानक पातशाह ने अज तो 500 साल तो वध समा पहला जो उपदेश दिता सी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत। अज सारा विश्व ता एनवायरमेंट के पोल्यूशन तो पीड़ित आ, उहदे विच जिहड़ा भारत दे विच बहुत वड्डा पोल्यूशन आ, जिहदे नाल बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा है वो जिहड़ा है देशवासियों का हो रहा। हवा के प्रदूषण कारण हर साल 21,08,000 मौतां जिहड़ियां हवा के पोल्यूशन करके हो जांदियां, जिहड़ी कि बहुत वड्डी गिणती है। इस हवा के पोल्यूशन के कारण जिहड़ियां हो रही मौतां। इस वेले जेकर हवा की जो गुणवत्ता की गल करिए तो दिल्ली दे विच सिर्फ साल दे विच एक दिन हवा जिहड़ी है वो नागरिकां नूं शुद्ध मिली है। बंबई दे विच 5 दिन ते चेन्नई दे विच 15 दिन साफ हवा जिहड़ी है वो साह लैण योग सी। बाकी सारा पोल्यूशन दे नाल जिहड़ा है सारे असीं मार चल रहे हैं। सो असीं ध्यान दिवाउणा चाहुंदे कि 2019 दे समय तो होने वाली मौतों के प्रदूषण कारण जिहड़ा विश्व की जिहड़ी हैगी है 37.8 बिलियन डॉलर का नुकसान होया, जिहड़ी भारत की GDP का 1.37% कुल GDP का हिस्सा है। बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा है एयर पोल्यूशन के नाल हो रहा। ये हैरानी की गल ये है कि जदों एयर पोल्यूशन की गल आउंदी है तो सब तो वड्डा बलेम पंजाब के किसानों के उत्ते धर दिता जाता है कि पंजाब के किसान पराली नूं अग लाउंदे आ तां पोल्यूशन आ, जदों कि
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 500 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, 500 ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय संतोलवीर जी 3 महीने का 3 मिनट का ही है ये 0 आवर, तो 3 मिनट, इसलिए उससे अधिक आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। प्लीज माननीय ऑनरेबल श्री पी विल्सन। Sir, there is an attempt to thrust the Uniform Civil Code by the Union government on the people of this country. The Uniform Civil Code proposes a unified set of personal laws applicable to all religions, which would govern marriage, divorce, inheritance and adoption. If the UCC is implemented, the current separate laws for Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Zoroastrians, Sikhs would be replaced by a common law. The question is whether the Union government is thinking of obliterating customs of all religions and kill secularism. India is a remarkably diverse country encompassing a wide range of religious, cultural and linguistic variations. Within Hinduism, numerous subcultures exist, each distinguished by its individual identity, traditions and customs. Imposing a single set of personal laws on all religions, subsects and denominations could potentially erode their distinctiveness and rich diversity. Sir, the first casualty of UCC would be the Hindu tribes, especially from states like Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka, who have a unique customs and traditions, who are all protected by Article 371, A to H of Constitution, and the UCC would destroy these constitutional guarantees. The second casualty is freedom of religion, guaranteed by Article 25 of the Indian Constitution, not only for minorities. Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Secretary General. Kind permission, I rise to lay on the table a copy of the Constitution 128th Amendment Bill 2023 passed by the House of Parliament during 261st session of Rajya Sabha and assented to by the President. Sri Rao Sahib Dadarao Danve. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhattji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 5 in today's revised list of business. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, Sri Brajlal. Thank you, Chairman, sir. I rise to present the following 3 reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Number 1, 246th report on Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Second, 247th report on Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and 248th report on the Bharatiya Saksh Bill 2023. The reports were presented to the Honorable Chairman Rajya Sabha on 10th number 2023 when the House was not in session and forwarded to the Honorable Speaker Lok Sabha on the same day. Orders for the publication and circulation of the report
were given by Honorable Chairman Rajya. Thank you, sir. Announcement. Honorable members, notices under Rule 267 received from Dr. John Britas, Sri P. Wilson, Sri Santosh Kumar P. and Sri Binoy Vishwam do not merit any admittance. Announcement 2. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Phulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Sri V. Vijay Sai Reddy, Sri Sukhendu Sekhar Rai, and Sri Kartikesh Sharma. Announcement 3. I have to inform honorable members that a letter has been received from Dr. D. Virender Hegde, member, stating that he is unable to attend the sittings of the current 262nd session of Rajya Sabha from 4th to 18 December 2023 due to his prior committed engagements. Does he have the permission of the House for remaining absent from 4th to 18 December 2023 during the current 262nd session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. Honorable members, announcement number 4. Based on the recommendations of the Business Advisory Committee, a procedure is in place that members who wish to speak in a debate should give their names to the table office not later than 30 minutes prior to the commencement of a debate with the approval of their party leader or whip. The procedure is also brought to the notice of the honorable members through issuance of a para in the Parliamentary Bulletin Part 2 before the commencement of every session. However, honorable members, it has been observed that during the course of debates, requests are received from the members from various parties to participate in such debates, and at times without the approval of their party leader or whip. This practice causes difficulty in regulating the speaking time of parties as well as individual members. Honorable members are accordingly requested to kindly adhere to the stipulated procedure and send their names for participation in a debate at least 30 minutes prior to its commencement through their party leader or whip. Matters raised with permission. Sri Dhananjay Bhimrao Mahadik. धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे महाराष्ट्र में 16 जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से फसलों के नुकसान के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। उपसभापति जी, महाराष्ट्र में प्रारंभिक नुकसान अनुमान के मुताबिक हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य भर में फसल की क्षति 1.3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने 3,93,325 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, इनमें से ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बुल्डाना, अकोला, वासिम, यवतमाल और गढ़चिरौली के करीबन 96 तालुकाओं में
बहुत बड़े पैमाने पे फसलों की हानि हुई है। प्रभावित फसलों में अंगूर, धान, केला, प्याज, सोयाबीन, कपास और गन्ना शामिल है। मैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आएगा 33% से अधिक क्षति पर जो मुआवजा तय किया गया है उन किसानों को, क्षतिग्रस्त किसानों को जल्द से जल्द मदद की जाए। धन्यवाद सर। श्री जगेश। Thank you for sir. I'll speak in my language. Print desk ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು MNCಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದ ಜನರನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಭಾಷೆಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद श्री जगेश जी। माननीय डॉक्टर फौजिया खान। Deputy Chairman, sir. Sir, the steep increase in screen time in early childhood years has become a growing concern in India. The advantage that technology has in education, entertainment and communication cannot be denied, sir. But it has been observed that very young children who are still in their early childhood years are spending more hours in front of screens than required. This has been found to have a negative impact on their various aspects of their personalities, their vision, their cognitive, their intellectual, emotional, social, and also physical development, sir. Most children are addicted to screens, with mobile phones playing the roles of babysitters in families. Sir, excessive screen time beyond approximately 1 hour daily links to behavioral problems and poorer vocabulary acquisition. The surge in screen-based technology usage among very young children has raised concerns about its impact on mental health,
and overall well-being. A study reveals a connection between increased screen exposure from 6 to 18 months of age and adverse outcomes, including heightened emotional reactivity, aggression, externalizing behavior. Such addiction may also lead to attention deficit hyperactivity, which is called ADHD, sir, and low academic output. Additionally, findings suggest that elevated screen time at 4 years of age is linked to lower levels of emotional understanding at 6 years of age. These observations underscore the need for a balanced approach to technology use to safeguard the mental health of young children, sir. To address these concerns, a comprehensive strategy should be implemented. The development of a policy framework should prioritize setting permissible limits for screen time during educational activities as well. Parents need support in understanding the consequences and in managing the children's screen exposure, and this can be achieved through educational programs and resources that guide them on effective supervision. Additionally, sir, one more important point, workplaces should consider policies that enable parents to balance workloads and allocate dedicated time for their children, fostering a healthier balance between technology use and quality time in the family. Sir, this dual approach, combining educational reforms and supportive parental policies, aims to create a more conducive environment for the holistic development of children while acknowledging the role of technology in education. The greatest risk, sir, is that this increases the risk of online predators exploiting small children through child pornography and sites, sir. The government must therefore pay attention to this critical issue. Thank you, Fauziya ji. Very important issue. Mani Sri Sandosh Kumar P. Thank you, Deputy Chairman, sir. I take this opportunity to demand the immediate release of rupees 5,352 crores center aid to the state of Kerala. It's the genuine share of the people of Kerala, and it is not anybody's generosity. And this amount includes 790 crores of rupees in the form of UGC pay revision, another 700 crores rupees for paddy procurement, and for healthcare it is 220 crores. So altogether it is 5,350 crores. And the state of Kerala properly submitted all the documents and made certain changes which were suggested by the central government. But even now, this huge amount is due to the state of Kerala. So I take this opportunity once again to demand the immediate release of the same. Moreover, sir, I would like to add one important thing, that the existing center-state financial relations must be redefined. According to the 15th Finance Commission, as it is rightly observed, states account for more than 62% of the total national expenditure. And these states are playing a major role in achieving the sustainable development goals. But whereas their income share is just 37%. This is a huge, glaring disparity, and this must be addressed within no time. And after the implementation of GST, states are also suffering with shortage of finance. So there is an immediate demand of revisiting, restructuring or redefining our center-state financial relations. Otherwise, we cannot achieve the sustainable development goals. And I request the union government, I demand the union government to take note of this. And let me add one more thing. Kerala as a state is the worst sufferer. 15th Finance Commission provided for just 1.9% of the central taxes for Kerala, whereas at the time of 10th Finance Commission, it was 3.9% of the central taxes. So please note all these points and please redefine this center-state financial relations. Thank you. Thank you, Mani Sri Sandosh Kumar. Please. Those who wants to associate, kindly send your names here. Mani Sri Sakti Singh Gohil ji. मैं एक
गुजरात के मछुआरों का इश्यू आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूँ। हमारा गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ है। आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान की कैद में है। सर, पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस की है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज फॉर 3 इयर्स। 3 साल से ज़्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी वो वहीं पे कैद में है। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा के ले जाती है, और जब फिशिंग बोट्स वहाँ रहती है उसके अंदर से सारे पुर्जे उठा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। तो अगर वो फिशिंग बोट वापस भी आती है तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती है। इसी को चलते हमने कुछ चीज़ें मांग थी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम मिले और 3-4 चीज़ें की थी। मैं आपके ज़रिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पुनः शुरू किया जाए। एक हमने शुरू करवाया था कि यहाँ मछुआरा का फैमिली अगर डाक भेजेगा, खत लिखेगा तो उसे कैद में मिलेगा, और कैद से मछुआरा जो पाकिस्तान की कैद में है वो अपने फैमिली को खत लिख सकता था। वो शुरू हुआ था, इस सरकार के रेजिम में वो बंद हो गया है। एक परिवार का बंदा किसी दुश्मन देश की कैद में है और उसके हालचाल भी परिवार नहीं जान सके, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हो, तो वो शुरू होना चाहिए। दूसरा हमने करवाया था, उस सरकार ने उस वक्त किया था कि जो भी मछुआरा फिशिंग बोट वहां गया और फिशिंग बोट वहां रख ली है तो उसके लोन की जो किस्तियां उसको रोक दिया जाता था और उसको सब्सिडी फिशिंग बोट के लिए दी जाती थी, वो भी आज शुरू नहीं है। तीसरी हमारी मांग थी और वहां पे हुआ था, पर राशि बहुत कम है, कि जो भी कमाने वाला जो है वो तो चला गया कैद में, और जनरली ये फिशिंग बोट में परिवार के जितने भी मेल मेंबर्स या कमाने वाले होते हैं वो साथ में होते हैं, वो चले जाते हैं, इधर सिर्फ बच्चे और महिलाएं बचती हैं, तो उनको कुछ सब्सिडीज मिलनी चाहिए। उस वक्त की सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए दी थी, कि जीपीएस दिया कि जिसे मछुआरे को भी पता चले कि मैं अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं तो वो वापस रहेगा। ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गुजरात गवर्नमेंट थी। C&AG ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैसे फिशरमैन की सेफ्टी के लिए दिए, जीपीएस सिस्टम के लिए, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से जीपीएस का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार की ये राशि थी, C&AG ने कह दिया है तो हम तो मानते हैं कि बहुत सीरियस चीज है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए सीबीआई के जरिए। थैंक यू सर। माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी। Thank you, Chairman. Thank you, Deputy Chairman, for giving me the time to speak on an important issue of farmers who are custodians of traditional seed varieties. So, India had rich agrodiversity. Scientist Dr. Rajya had documented thousands of valuable paddy varieties which were evolved and selected by our ancestral farmers. Though Green Revolution paradigm eroded this rich agrodiversity wealth, our farmers continue to conserve some of them in their farms. Despite great logistical hardships and financial hardships, these farmers are conserving thousands of varieties of different. A report of the Committee of Privileges, Sri Ilamaram Karim. Honorable Chairman, sir, I rise to present the 75th report in English and Hindi of the Committee of Privileges on questions of alleged intentional and deliberate act of presenting misleading facts to the media, misrepresentation of the proceedings of the Council, and affront to the authority of Chair, and for including the names of members in the proposed select committee without their consent in violation of rules by a member. Thank you. Honorable members, the committee, after deep and thoughtful consideration, finds Sri Raghav Chadha, Honorable Member,
guilty for both the charges. Charge 1, that he intentionally and deliberately presented misleading facts to the media, misinterpreted proceedings of the council, resulting in affront to the authority of the chairman Rajya Sabha, and engaged in outrageous defiance of the resolutions of the House and directives of the Honorable Chairman Rajya Sabha. And charge 2, for including the names of members in proposed select committee without their consent in blatant transgression of Rule 72 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha. As regards the sentence, the committee finds the suspension suffered by him since 11th August 2023 from the House thus far as sufficient sentence that will meet the ends of justice. The committee stands committed to upholding the sanctity of parliamentary proceedings and safeguarding the integrity of the institution. The committee expresses hope that Sri Raghav Chadha, member, will reflect and introspect. The committee expects Sri Raghav Chadha to uphold the expected standards of conduct and decorum befitting a member of parliament. Honorable members, Sri GVL Narasimha Rao, honorable member, to move a motion in the matter. Sir, the mic is not on, sir. May I go ahead, sir? Okay. Sir, I move the following motion under proviso to Rule 256(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, that this House resolves that Sri Raghav Chadha, member, be held guilty of breach of privileges and the suspension suffered by him so far be taken as sufficient punishment, and the House may consider discontinuance of suspension of Sri Raghav Chadha, member, from the service of the Council from this day. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Raghav Chadha may attend the proceedings of the House. The Post Office Bill 2023, Shri Ashwini Vaishnav to move a motion for consideration of the Post Office Bill 2023. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. माननीय मंत्री जी, आप बोलना चाहेंगे? Honorable Chairman, sir, 125 साल पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए बिल लेके आया गया है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। जैसा हम सब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, डाक और डाकघर और डाकिया ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे देश भर में जन जन में बहुत ही एक बड़ा विश्वास है। 125 साल पुरानी संस्था को एक समय था जब लग रहा था कि ये इररिलेवेंट हो जाएगा, विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरीके से फेज आउट करने की नौबत आ गया था। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है, उस रिवाइवल का रिफ्लेक्शन है इस नए बिल में। माननीय सभापति महोदय, पिछले 9.5 वर्षों में डाक और डाकघर और डाकिये को इसको मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी के एक इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया गया है।
पोस्ट ऑफिस को प्रैक्टिकली एक बैंक में कन्वर्ट किया गया है। डाकघरों का विस्तार 2004 से 14 में जहां 660 डाकघर बंद किए गए थे, आज आपको जानकर खुशी होगी माननीय सभापति महोदय, सदन को जानकर खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच में करीब 5000 डाकघर नए खोले गए और करीब 5746 और नए खोलने की प्रक्रिया में। 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के जरिए से कनेक्ट किया गया है। जैसा मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्जन का विजन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी के तहत डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र 434, जिसमें अब तक करीब 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा चुकी है, और डाकघर आधार सेवा केंद्र 13,500 खुले जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते, जो बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल बनता है, उसमें 1,41,000 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि बैंक को पोस्टल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें केवल महिलाओं के, बहनों के 3.5 करोड़ से अधिक खाते अभी तक खोले जा चुके हैं। सभापति महोदय, आपको एक और बहुत जानकर खुशी होगी कि डाकघर निर्यात केंद्र एक ऐसी सुविधा बनी है जिसके जरिए से एक रिमोट एरिया से भी, साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी देश तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। अब तक 867 डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 60 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है। और इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कर्नाटक के बेलगांव से एक बहन सृष्टि करंजनी घर में बने वाटर कलर एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को। पंजाब के सरहिंद से एक भाई शिव कुमार आयुर्वेदिक दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनगर से भाई श्री आदिल अहमद खान गलीचे रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आसाम के सुदूर गोलाघाट से सैयद असद भाई जूट से बने हैंडबैग एक्सपोर्ट करते हैं। और कोट्टायम केरला से मैथ्यू जोसेफ नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं। तो इस तरह के ऐसी सुविधाएं डाकघर के जरिए से मिल रही है आज, उसका ग्लोबल रिकॉग्निशन भी है। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीयू, उसने अभी रिसेंटली स्पेशल जूरी अवार्ड दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव टेंडर, इंक्लूसिव ट्रेड इंक्लूजन के लिए डाकघर निर्यात केंद्र को यूपीओ से अवार्ड घोषित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, डाकघरों में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक 3 डायमेंशनल प्रिंटेड डाकघर बना बेंगलुरु में, और एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा खाते खोले गए। ओवरऑल इस 125 साल पुराने कानून की एवज में जो नया कानून लाया गया है, अति सरल भाषा में बना है। छोटा सा कानून है, 17 क्लॉजेस का, और सारा का सारा फोकस है मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पे और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज पे शिफ्ट होने का। धन्यवाद। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करूं। इसके पहले एक अनाउंसमेंट। I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is on the 4th December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Number 1, consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023, 6 hours. Consideration and passing of the following bills as reported by a standing committee after they are passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023, 12 hours to be discussed together.
Consideration and passing of the Central University Amendment Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands after they are passed by Lok Sabha. First batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and second demands for excess grants 2020-21, 6 hours to be discussed together. Now, list of speakers. माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जान सकता हूं कितना वक्त है मेरे पास? 15 मिनट है माननीय जी। 15 मिनट जी, थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय, ये बिल जब लाया गया है और मूवर ऑफ द बिल मंत्री जी ने कुछ इतिहास, कुछ ऐसी बातें रखी है यहाँ पे। मैं जरूर ये कहूंगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट परिकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था जब मैसेज देने के लिए तरह तरह के ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, किसी आवाज के जरिए, किसी झंडे के जरिए, पंछियों के जरिए, और धीरे 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 उसमें सुधार आते गए। हमारे देश में भी अलग अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एक रूप में परोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने एक किया वो आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था। तो इसको लेके डाक सेवाएं शुरू की गई। रैन हेस्टिंग्स वो आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मेल के नाम से इसको एक रूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डेलहाउसी ने 1854 में इंट्रोड्यूस करके एक सिस्टेमेटिक वे में हमारी डाक सेवाओं को बनाया। आजादी के बाद हमारे उस वक्त के सूझबूझ वाले नेताओं ने ये सोचा, इफ यू वांट टू स्पीक आई कैन गिव फॉर 5 मिनट्स। अगर उस वक्त पे हमारे उन नेताओं ने ये सोचा कि कुछ आवाम की चिंता करते हुए पब्लिक अंडरटेकिंग्स होने चाहिए, पीएसयूज होने चाहिए, और पीएसयू प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। मुनाफा कमाना पीएसयू का सिर्फ काम नहीं है। पीएसयू का काम होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, सर्विस ओरिएंटेड बन के काम करने का। कि अगर किसी एक गांव में, छोटे से गांव में, एक झोंपड़े में किसी को डाक पहुंचाना है तो वहां पहुंचनी चाहिए। वो सोच थी और उसी सोच के चलते आजादी के बाद जो भी सरकारें बनी उनकी एक दीर्घ दृष्टि थी कि इस डिपार्टमेंट को, इस पोस्टल सर्विसेज को इतना बेहतरीन बनाया साहब कि उपसभापति महोदय, आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डाक सेवा कहीं पे है तो वो हमारे देश में है। कुछ लोग फर्जी डिग्री वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 70 साल में इस देश ने क्या किया। मैं कहता हूं देश ने ये करके दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, सबसे अच्छी डाक सेवा वो हमारे देश में बनी। वो विजन था। आज आप पीएसयू को मार दोगे और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करोगे। कुरियर वाला टाई पहन के आपको कुरियर दे जाएगा, पर दिल्ली में दे जाएगा, बंबई में दे जाएगा, अहमदाबाद में दे जाएगा।
क्या वो कच्छ के अबड़ासा के एक छोटे गांव में वो कुरियर वाला डाक देने जाएगा? वो नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए उपसभापति महोदय, सरकार को के मंशा से हमें निकल जाना होगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर ये काम करेंगे, पीएसयू की जरूरत नहीं है। आज गांव में भी अगर किसी के ऊपर विश्वास है तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे विश्वास है। आज भी कहता है कि डाकिया डाक लाया है। डाकिए की डाक पे आज गांव के गरीब का भरोसा है। आप उसको मारने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे आवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं इस बिल के कुछ प्रावधान के ऊपर जाने से पहले एक दो बात रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, ये सरकार पीएसयू के जरिए मिलने वाली सर्विस पे कैची क्यों चलाती है वो मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्टल सर्विस के अंदर एक हुआ करता था यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, और यूपीसी का आधार अदालतें भी मानती थी कि यूपीसी से गई हुई डाक है, मींस इट इज सर्टिफाइड, सामने वाले को मिली है। और रजिस्टर्ड पोस्ट वाज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू रजिस्टर्ड पोस्ट। यूपीसी वाज with very less money one was able to do यूपीसी। अब आपने क्या कर दिया? यूपीसी खत्म कर दिया। आज अगर जाओ पोस्ट ऑफिस में और कहो कि मुझे एक खत यूपीसी के जरिए हमारे मंत्री जी को भेजना है, तो कहेंगे कि नो मोर यूपीसी सर्विसेज इज अवेलेबल इन पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या हम ये करना चाहते हैं? सिर्फ नाम बदलने से, नया कानून बदलने से कुछ नहीं बदलता है। अपनी मंशा लोगों के सेवा करने के लिए बदलनी होगी। आम आदमी को, आम नागरिक को फायदा कैसे पहुंचे उसकी चिंता हमें करनी होगी। तभी सही मायने में मैं मानूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP, also known as the Indian Post, has been backbone of the country's communication, has played a crucial role in country's social and economic development. बहुत crucial role इसने किया है। आप इसको कोरोना काल आया, समझ सकता हूं, सभी को लॉसेस हुआ, और इसकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कहीं हुई होगी तो वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर हुई होगी। आप दीजिए उनको सब्सिडी, आप दीजिए उनको पैसा, आप इनको मजबूत बनाइए। मैं आपके जरिए मंत्री जी को कहना चाहता हूं, पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारा स्पोर्ट्स का कोटा रहता है। इस देश के नाम रोशन करने वाले हमारे रमतवीरों को इस डिपार्टमेंट में नौकरियां मिलती थी। मुझे खुशी होगी मंत्री जी जवाब देंगे कि कितने वक्त से आपने वो स्पोर्ट्स कोटा के उन हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को जॉब में नहीं लिया है, और क्यों नहीं लिया है? और आप जब लेते हो किसी को तो थोड़ी निगाह उधर भी रखिए कि अगर आपने एक नेशनल प्लेयर जो टेबल टेनिस की है और उसको नौकरी दी है, और अगर उसकी पोस्टिंग आपने ऐसी जगह की है कि जहां पे टेबल टेनिस के बच्चों को वो प्रशिक्षित नहीं कर सकती या खुद की भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, तो उसका क्या फायदा होगा? आप रखिए उसको उस जगह पे जहां टेबल टेनिस में इंटरेस्टेड बच्चे हों। उस तरह से इस डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। मैं इंडिविजुअल केसेस यहां डिस्कस नहीं करता हूं, पर मंत्री जी कहेंगे मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उनको जरूर दूंगा। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो नया कानून लेके आए हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स वेरेवर द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पोस्ट्स, it will have an exclusive privilege
conveying letters by post, as well as incidental services such as receiving, collecting, sending, delivering letters. The bill does not certain such privileges. The bill also states that the post office will have the exclusive privilege of issuing postage stamps. मैं एक और प्रावधान पे माननीय उपसभापति महोदय आपके जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो आप प्रावधान कर रहे हो उसमें प्रावधान है इस नए कानून की वजह से The Act specifies the services provided by the post offices include the delivery of postal articles including letters, postcards, parcels, money orders. The bill provides that the post office will provide services prescribed by the central government. आप क्यों नहीं क्लैरिटी करते हो कि आप ये इनसे करवाना चाहते हो? कानून बनाना संसद का अधिकार है। उस अधिकार के ऊपर कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसा ग्रे एरिया ना रखे कि कानून बन गया है तो बाद में मुझे जो ठीक लगेगा वो सर्विसेज लूंगा मैं इनसे। कल कोई पॉलिटिकल पार्टी है वहां से सोचेगी कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी के ये पैम्फलेट्स भी इनसे बंटवाना है और इसके लिए मुझे ये रूट करना पड़ेगा तो मैं रूट करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी सर्विसेज लेना चाहते हो come with a clear hand, come with a clear proposal. We are here to discuss and then we'll either pass or reject the bill, but we'll have an opportunity to express ourselves. आप इसका ग्रे एरिया आज एक बार बार ऐसे बिल्स आते हैं मैं देखता हूं, हम पास तो करते हैं पर उसमें क्लैरिटी नहीं होती और बाद में नोटिफिकेशन के जरिए बाद में कुछ अमेंडमेंट के जरिए सरकार उसको अमेंड करती रहती। Now the another provision by this bill is power to intercept shipments. साहब, privacy, right of privacy is a fundamental right. मैं जानता हूं सिक्योरिटी जरूरी है, मैं समझ सकता हूं लोगों की सुरक्षा के लिए आप करो, बट ऑन नेम ऑफ सिक्योरिटी अभी अभी हमने देखा कि वर्ल्ड में जिस एक कंपनी का नाम है कि जिसका सॉफ्टवेयर कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, हमारे जैसे मुझे भी मिला एमपीज को कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स आर ट्राइंग टू हैक योर मोबाइल। किस दिशा में हम जा रहे हैं? और अगर आप राइट टू प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करवाते हो ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, मैं मानता हूं इस बिल के इस प्रावधान को। और आप पावर्स कैसे देते हो? सर, आई विल टेक यू टू दोज प्रोविजंस, आई विल रीड व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस बिल। Powers to intercept shipments. The Act allows the interception of a shipment being transmitted through the post on certain grounds. Now just look at what are the grounds. An interception may be carried out on the occurrence of any public emergency. Is there any clarity? What is public emergency? When you have objects and reasons, I fail to understand why government in objects and reasons not clarifying what is the public emergency. Thereafter, or in the interest of public safety or tranquility. एक वाइड रेंज आपने दे दी, उसके बाद आगे आप कहते हो such interception may be carried out by the central government, state governments or any officer specially authorized by them. Why don't you clarify? किस लेवल के ऑफिसर को आप स्पेसिफाई करोगे? क्या एक छोटे लेवल के अधिकारी को आप करना चाहते हो या किसी जिम्मेवार आदमी को करना चाहते हो? I'll continue. An interception of shipment can be detained or disposed of by the officer in charge
the officer also have a powers to open, detain or destroy the shipment. डाकिया के ऊपर का भरोसा आपके ऐसे प्रावधान से चला जाएगा। आज एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड के ऊपर भी लोगों को भरोसा होता है कि मैंने लिखा तो ये पहुंचेगा। आप ये प्रावधान करके आप क्या करने जा रहे हैं? हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, हम बात करते हैं विश्व गुरु की, और हम विश्व गुरु जहर की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस बात को गौर से देखिए और मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे प्रावधानों में आप क्लैरिटी लेके आइए कि किसको आप कब, कौन, कहां और कैसे करेगा। मैंने पहले ही कहा कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। मैं आखिर में एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जब छोटी जगह पे नौकरियां देते हैं, लास्ट एक ही मिनट में करना, तो वहां पे अगर आप पोस्टमैन को, आप पोस्टल डिपार्टमेंट में गांव में किसी को नौकरी देते हो तो वहां के लोकल यूथ को आप प्राधान्य दें। उसी गांव का डोमिसाइल है, वहीं का रहने वाला है, उसको आप अग्रिमता दें। शहर से नौकरी ले लेता है, फिर कोशिश करता है ट्रांसफर और करवाने की, वो गांव में टिकता नहीं और छोटा गांव परेशान होता है। तो उसी गांव का या विद इन 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स नहीं मिलता है तो स्टेज बताइए आप और वहीं के लोकल को रखिए, तो जहां पे रहेगा वो वही काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मेरी बात मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 12 मिनट आपके पास। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि पोस्टल बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस सरकार ने जो पोस्टल बिल 2023 लाई है, ये गरीबों के लिए और सेवा सुशासन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर लाई है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज जनता के प्रति समर्पित सेवाएं हों, इस दृष्टि से ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लाया गया है। सबका साथ सबका विकास, ये विषय भी इसे पोस्टल बिल का केंद्र में है। महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों, जिसमें सभी जाति वर्गों के लोग आते हैं इस व्यवसायिक वर्ग में, उन सबको ये पोस्टल बिल लाभकारी होगा, लाभ देगा, ऐसा मेरा मत है। अभी मैं इसमें कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से जो क्रमशः 2014 के बाद पोस्ट ऑफिस सर्विसेज पर भरोसा बढ़ रहा था, उस भरोसे को पुष्ट करने का काम पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से किया है। सरकार ने इसको बैंक में परिवर्तित किया है। सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के रूप में भी कन्वर्जन इस सरकार के कार्यकाल में किया गया है। गरीब कल्याण, महिला कल्याण और किसान कल्याण योजनाओं का लाभ भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम भी सरकार के द्वारा किया गया है। मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के द्वारा 700 पोस्ट ऑफिस बंद किए गए थे। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 5000 से ऊपर पोस्ट ऑफिस खोले हैं। यही साबित करता है कि ये सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है। यही साबित करता है कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को गांव, गरीब और किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार समर्पित है। अब 5000 कुछ और खुलने जा रहे हैं, तो कहां 700 बंद करने वाली सरकार और कहां 10,000 बैंक को, पोस्ट ऑफिस को खोलने वाली सरकार। रोजगार का सवाल बताया गया है। ये अगर नए डाकखाने खुलने हैं तो किसी बिना मैन पावर के तो नहीं खुलेंगे। 1 लाख लोगों को नौकरी 5000 डाकखाने खोलने पर मिली है, तो जब ये 5700 डाकखाने खुलेंगे तो रोजगार का सृजन स्वाभाविक होगा। ये तथ्य भी समझ में हमको आना चाहिए। डाक निर्यात केंद्र कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। व्यक्ति अपने निर्यात करने वाली सामग्री को लेकर डाकखाने में जाता है, डाकखाना उसको उसके लिए बॉक्स प्रोवाइड करता है, बॉक्स में उसका सामान रखकर टेपिंग करता है, पता लगाता है और उसके निर्यात वाले सामान को उस स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी कल्पना भी कभी हिंदुस्तान में नहीं थी कि डाकखाना भी निर्यात केंद्र के रूप में काम करेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र ठीक है कि 7-8 साल पहले हुए थे, लेकिन आज 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट की सुविधा, क्योंकि डाकखाना हर जिले में है,
पहले पासपोर्ट सेंटर के लिए हमको जाना पड़ता था, मेरठ के लोगों को गाजियाबाद जाना पड़ता था और अदर जिलों में जाना पड़ता था। आज मेरठ के पोस्ट ऑफिस में सुविधा मिली है, तो उस सुविधा को और मजबूत करके 1.5 करोड़ लोगों का पोस्टपार्ट जारी करने का काम किया गया। टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग की दिशा में ले जाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। डिजिटल पेमेंट योजना ये भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसी सरकार के द्वारा चालू की गई है। श्रमिकों के बारे में जिसकी चिंता बहुत कम लोग किया करते थे, उन श्रमिकों का भी बीमा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है और लगभग 1.5 लाख श्रमिकों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा चुका है और अब इसके सफल होने के बाद इसका विस्तार करने का संकल्प भी सरकार का है। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। डाकघर में डाक के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई और विकास को प्राथमिकता दी गई इस नए बिल में। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। पिछली सरकार का डाक के जो संबंध में विधेयक है, इसमें पिछली सरकार भी विधेयक लाई थी, लेकिन 1986 में विधेयक आया था जिसको राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए भेजा गया और जुलाई 1987 में अपने पद पर रहते हुए भी उस बिल को सहमति नहीं दिला पाई थी सरकार और वो बिल वापस हो गया, ना उन्होंने संसद को वापस किया गया। उसके बाद जब अगले महामहिम राष्ट्रपति जी आए तो जनवरी 90 में उन्होंने पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया और 2002 में वो बिल वापस हो गया। वर्ष 2002 में भी इस प्रकार का एक प्रयास हुआ पोस्ट ऑफिस के सेवाओं में सुधार के लिए बिल कानून लाकर, लेकिन वो भी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये बिल भी लैप्स हो गया। 2006-2011 में 2 ड्राफ्ट बिल जारी किए गए सदन के विचार के लिए, लेकिन वो ड्राफ्ट बिल भी स्टैंडिंग कमेटी में पहुंच गए और उसके बाद सदन में उसका मतलब वो बिल का रूप में परिणित नहीं हुए मान्यवर। ये बिल 2023 सरकार ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा लाई है और पास भी होगा। पास होगा तो पिछले इतिहास को अगर हम देखते हुए कहें तो इस सरकार की संकल्प शक्ति मजबूत संकल्प शक्ति है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस बिल को जब पास कराएगी तो ये पोस्ट ऑफिस सेवाएं आम जन का भाग बनेंगी, ऐसा मुझको कहना है। सारी चीजें सरकार पर निर्भर नहीं होंगी। इस बिल के बाद महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा और उसको प्रभावी बनाया जाएगा और महानिदेशक के जो निर्णय होंगे उस निर्णय को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। डाक सेवा के महानिदेशक जब भारतीय डाक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा तो सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति के मामले में नियम बनाने की शक्ति भी उसमें निहित होगी। महानिदेशक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी गतिविधि का नियम बना सकेंगे। डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री के भी नियम बने जाएंगे। मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्जेज और दरें तय की जा सकेंगी। डाक घर को डाक टिकट जारी करने का भी अधिकार हो जाएगा। आधुनिकीकरण को बढ़ावा होगा और ड्रोन के जरिए पार्सल और लेटर भी पहुंचाए जाएंगे। हमने अपने बचपन में सुना था कि कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाया करती थी किसी युग में। आज ड्रोन के जरिए पत्र भेजने का संकल्प इस बिल के माध्यम से सरकार का है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था वर्तमान आतंकवाद के युग में और निजता, इसके बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई है। इंटरसेप्शन करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित तरीके से हो, ये मेरा इस संबंध में निवेदन है। लेकिन सरकार इस बात की सावधानी रखेगी, इसका मुझे विश्वास भी है। केंद्र सरकार वस्तुओं को पते पर पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड उपयोग करने के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। आइटम एड्रेसिंग मानकों, पते की पहचान और पोस्टल कोड के उपयोग के माध्यम से केंद्र सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसी परिसर की सटीक पहचान के लिए भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा, जबकि डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है। यह छटाई की गई प्रक्रिया को सरल बनाएगा और मेल और पार्सल डिलीवरी की सटीकता भी बढ़ाएगा और उसमें शीघ्रता भी लाएगा।
सबसे बड़ी बात इस बिल की ये है कि ये नागरिक केंद्रित सेवाओं को विकसित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए विधेयक लाया है। मोबाइल और फोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में ये विधेयक और भी अधिक प्रासंगिक रूप में है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी जहां योगदान देगा। भू-स्थानिक कोड का कार्यान्वयन सफल होने पर सरकार ड्रोन के माध्यम से पार्सल को कुरियर करने की क्षमता में होगी। भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में नियमों के निर्धारित किसी भी दायित्व के अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं लेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, तुलनात्मक अध्ययन पिछले अधिनियम में और वर्तमान अधिनियम में। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में 77 धाराएं थीं। डाकघर विधेयक 2023 में केवल 16 धाराएं। पत्र डाक पर एकाधिकार था पिछले अधिनियम में। डाकघर विधेयक 2023 में अब एकाधिकार नहीं। दंडात्मक प्रावधान की 23 धाराएं थी पिछले एक्ट में। इस एक्ट में कोई दंडात्मक धारा की व्यवस्था नहीं है। फोकस है पहले था मुख्यतः मेल पर, डाक पर। अब डाक द्वारा जनता के उपयोग की सुविधाएं उसके मोहल्ले में और उसके गांव में देने पर केंद्रित है नया विधेयक 2023। रिजर्व एरिया में पहले पत्र रहते थे, अब डाक टिकट, डाक लेखन सामग्री भी उपलब्ध होगी। भाषा पहले जटिल थी, अब इस विधेयक को सरल करने का काम किया गया। दायरा पहले सरकार केंद्रित था डाकखाना, अब नागरिक केंद्रित है डाकखाना। ये इस विधेयक पोस्टल बिल 2023 के माध्यम से जनता को उपहार के रूप में मिलेगा। डाक शुल्क सीमित डाकघरों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को देय राशि को कवर करने का काम करेगा। और वो जो बात मैंने पहले कही थी कि पता सूचकों और पोस्ट कोडों का प्रावधान होगा। पहले दरों को तय करने की शक्ति शासन में थी, अब महानिदेशक में होगी। कुल मिलाकर इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने पोस्टल सेवाओं को जन उन्मुखी बनाने में जो प्रयास प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर पिछली सरकारों के जिनके बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाकर या लैप्स होकर चले गए, सरकारों को कोई चिंता डाक सेवाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की नहीं थी। आदरणीय मोदी जी की सरकार में और आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार का विधेयक लाए हैं, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं, साधुवाद भी देना चाहता हूं। और इस बिल के माध्यम से डाक सेवाएं जनता के दरवाजे पहुंचेंगी, जन उपयोगी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नाउ ऑनरेबल श्री सुखेंदु शेखर राय जी। थैंक यू सर। आज मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच का माहौल ऐसा है, शायद उनका मन में ये पुराने गीत गुनगुना रहे हैं कि कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल के ए धड़कन ठहर जा, मिल गया मंजिल मुझे। मैं बधाई देता हूं उन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को भी, जो भी सफलता जिनको मिला है। लोकतंत्र में ऐसा होता है। और आज के दिन एक ऐसा बिल लाया गया जिसके लिए मेरे मन में बहुत अफसोस है। मैं वो अफसोस जताना चाहता हूं। पहले तो एक बात है कि मैं सिर्फ 2 क्लॉज का रेफर करूंगा। क्लॉज 9 सब क्लॉज 1, शक्ति सिंह जी बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट may empower any officer to cause any item in course of transmission by the post office to be intercepted, opened or detained in the interest of the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency or public safety, or upon the occurrence of any contravention of any of the provision of this Act or any other law for the time being in force. Now, before I come back to this, if we look at clause 16, subclause 1, it says, the Indian Post Office Act 1898 is hereby repealed. तो रिपील हो गया वो पुराने एक्ट, लेकिन फिर क्लॉज 16 का सब क्लॉज 2 में बताया जा रहा है, notwithstanding the repeal of the act
all rules, notifications and orders made or purported to have been made under the Indian Post Office Act 1898 shall, in so far as they relate to matters for which provision is made in this Act and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made under this Act, and shall continue. So on the one hand it is repealed, on the other hand the other provisions which are not inconsistent with this Act shall continue. So, हाँ भी है, ना भी है. Sir, I am coming back to clause 9(1). This section, according to me, fails to specify the procedures to be followed for interception by the authorized postal officer. What is the procedure that shall be followed by the postal officer while intercepting? National security, everyone, every citizen of this country is concerned. We are also concerned. Had there been any provision that based on the information received from central agencies who are dealing with the national security point, then also we could have agreed to this provision. But mere suspicion, on the basis of suspicion even, that authorized officer can intercept, open, destroy, anything he wants to do. Sir, this is arbitrary. This is arbitrary. And in plethora of cases, the Supreme Court has held that arbitrariness in executive action is antithesis to law, antithesis to rule of law. This government has not even shown any respect to the hundreds of cases, case laws, which have established this point. So the grounds specified for interception is absolutely vague, that anything and everything can be brought under this provision. For example, the expression emergency, one of the expressions is emergency, other than national security. But the expression emergency has not been defined in the definition clause, that is clause 2 of this bill. So what is emergency? Nobody knows. Sir, this provision has given unbridled powers to the authorities concerned. And I remember one of the Supreme Court verdict, which was given in 1996, in the case of interception of telecommunications, where the Supreme Court held, that was a 1996 case, that a just and fair procedure to regulate the power of interception must exist. Otherwise, it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 19(1)(a) as a part of the right to life, the freedom of speech and expression, and Article 21, right to privacy, as a part of the right to life and liberty. It was reiterated in the People's Union for Civil Liberties versus the Union of India in 2004. Sir, in this context, I would like to refer another act passed in this year, the Jan Biswas Amendment of Provisions Act 2023, which removed all offences and penalties from many acts, including the Indian Post Office Act 1898, in the name of ease of doing business and ease of living. And virtually, in my opinion, the Act has turned to be Jan Avishwas Act, in as much as it has ensured a free-for-all situation for the wrongdoers in detriment to public interest. So in this bill also, Clause 10, Subclause 2 provides
and I quote, "No officer of the post office shall incur any liability with regard to a service provided by the post office unless the officer acted fraudulently or willfully caused loss, delay or misdelivery of service." However, what would be the consequences if any postal officer fraudulently act or willfully cause loss to service? There is no such provision. Sir, kindly, 1 minute. In the Parent Act of 1898, there was provision for imprisonment up to 2 years and fine or both. That has been removed. This bill does not whisper about the private courier services, and they have been excluded from the purview of the bill. This undermines the equality before the law. This is too much of laissez-faire. Sir, finally, I submit that this bill, if passed, shall create another avenue in transforming our democracy into a surveillance state after the Pegasus Gate. And this is why I oppose this bill in its entirety on behalf of my party, All India Trinamool Congress. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mani Sukhendu Sekhar Rai ji. Now, Honorable Sri P. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. I raise to express my strong opposition to the Post Office Bill 2023 in its current form, as it will lead to winding up of post offices and its services in India. Bill is a step to privatize and encourage private players in postal services. The bill is introduced without studying the services required in the competitive world. It lacks a complete blueprint on infrastructural upgrades, technological intervention for sorting and facilitating accurate delivery of mails and parcels, and appears to be a hasty exercise just to replace old colonial laws. Our prestigious India Post, which is the world's largest postal network, has its presence across every nook and corner of our country, serves as a vital link connecting urban and rural India. Often viewed as a lifeline for 1.4 billion Indians, it plays a crucial role in our daily lives. The proposed bill, aimed at replacing the India Post Office Act 1998, needs an immediate reconsideration, as certain provisions could have far-reaching implications. Under Clause 9, the central government can empower any postal officer to intercept, open, detain any postal article on the grounds of security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency of public safety. The provision grants unfettered powers to the union and officers to arbitrarily intercept, open or detain any postal article in the garb of national security or public safety. In the absence of any procedure or yardsticks or guidelines to be followed by such officers, such powers are nothing but another steps towards the surveillance state, which is violation in the teeth of Article 14, 19(1)(a) and Article 21 of the Constitution. It is pertinent to mention that the Honorable Supreme Court in a catena of judgments has upheld the ethos of right to privacy. I ask myself the question as to how any officer of the post office is qualified to undertake such functions which are in the nature of the search and seizure. By granting such powers, the privacy of all the citizens who use services of Indian Post is severely compromised, since there is no provisions in the bill which injuncts the officer from leaking any contents of the intercepted postal articles. A son will be writing to his mother, a husband will be writing to his wife, brother to his sister, a client to his lawyer, lawyer to the client, cabinet communications to the other departments. Can you intercept these communications as stated in Clause 9? Will it not affect the privacy, or it will affect the confidential privileged communications which are protected under the law? Clause 10 exempts the post office from any liability with regard to the service provided by the post office. This provision is severely vague and suffers from the ambiguity on the phrase "such liability" in section 10(1) can be interpreted to be anything.
The provision makes no regard to the value of the articles to be dispatched through post. Many private players, in case of any lapse of services, will provide options such as the value of the articles in the transit or money back guarantee. However, the Indian Postal Department seeks to absolve itself from compensating from any loss caused due to the lapses in services. This indeed can open the way for abuses, as the party empowered to impose such rules is an interested party. Though it prescribes liability for postal officers who are acting fraudulently or willfully causing losses, delay or misdelivery, the consequence of such action is not provided in the bill. This dilutes the provisions of the earlier Act 1898, which prescribes imprisonment, fine or both in the above cases. Clause 10, thus, is highly arbitrary and discriminatory and pushes the people to skip the Indian postal services. The bill, under the statement of objects and reasons, aims to provide for a simple legislative framework to facilitate evolution of the post office for delivery of citizen-centered services. However, the provision shows that such evolution is only backwards. The bill grants the parallel powers to both the Union and also to the Director General to frame rules and regulations for conducting any functions essential for running of a post office. This highlights the ambiguity and overlapping powers of central government and the Director General in framing the rules and regulations for delivery of several postal services. I request this House, while we recognize the importance of modernizing our postal services to be competitive with the private players, and it's crucial to strike a balance that upholds constitutional principles, protects fundamental rights, and ensures accountability. Our rich postal heritage, serving millions across the nation, deserves a legislative framework that reflects the spirit of transparency, fairness, and citizen-centric governance, and not another source for surveillance state and affect the fundamental rights of speech and reputation. Thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you. Thank you, Mani P. Wilson ji. Mani Sri Raghav Chadha. सर, अपने 115 दिन के सस्पेंशन समाप्त होने पर पहली बार इस सदन में बोलने जा रहा हूं और इस नए संसद भवन में पहली बार बोलने जा रहा हूं, तो आपका संरक्षण चाहूंगा सर। 5 मिनट समय आपका। आप इसे मेडन स्पीच भी मानकर मुझे अधिक समय दे सकते हैं अगर चाहें तो। सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर, ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें 2 बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट को, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर, कोई दायरा, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी इस पूरे कानून में नहीं लिखा गया है। मैं पहले सेक्शन 9 पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। सेक्शन 9 कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपनड or detained in the interest of 1, security of state, 2, friendly relations with foreign states, 3, public order, 4, emergency, and 5, upon the occurrence of any contravention of any provisions of this act or any other law for the time being in force। यानी कि इन 5 सिनेरियोज में पूरी शक्ति है इंडियन पोस्टल ऑफिस को कि वो किसी के भी डाक को या कंसाइनमेंट शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, खोल सकती है। इसमें 7 बड़ी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर
सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहें, सरकार को मालूम रहे। ये एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है जिससे ये बिल पूरी तरीके से पीड़ित नजर आता है सर। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो समस्या निकल कर आती है वो ये है कि ये बिल प्रोसीजर स्पेसिफाई करने में फेल हो जाता है कि वो कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसके तहत आप किसी डाक को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। ये एक आर्बिटरी शक्ति नहीं हो सकती है, ये शक्ति निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसे कौन से इमरजेंसी या फ्रेंडली स्टेट्स को आप फायदे पहुंचाने चाहते हैं जिसके चलते, या खास तौर पे किसी भी प्रावधान, किसी भी कानून का कोई वायलेट होता है तो वो आपको शक्तियां दे देता है कि आप किसी की भी डाक रोक लें। ये इसमें दूसरी बड़ी खामी है सर। तीसरी बड़ी खामी है कि जिन ग्राउंड्स को स्पेसिफाई किया गया है कि किन ग्राउंड्स के तहत आप किसी के भी डाक को या शिपमेंट को खोल सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स बहुत वेग हैं। वो किसी भी शिपमेंट को रोकने के लिए या किसी भी कंसाइनमेंट या चिट्ठी या डाक को रोकने के लिए कोई भी कानून पकड़कर या कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप उसे रोक सकते हैं। इतने वेग ग्राउंड्स ये कानून भारतीय डाक सेवा को देने जा रहा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा जो इस बिल से है कि जो अफसर इसको इंटरसेप्ट करेगा या कॉन्फिस्केट करेगा, अगर वो अफसर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे पूरी आजादी है। पांचवा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है सर। इसके साथ एक और मैं खतरनाक चीज बताना चाहूंगा कि ये राइट टू प्रिवेसी जो है, ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। और राइट टू प्रिवेसी का एक हाल ही में वायलेशन मेरे साथ और इस सदन के कई सदस्यों के साथ हुआ, जब हमें अपने स्मार्टफोन पर, एप्पल के स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में सर ये लिखा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने आपके फोन को इन्फेक्ट कर दिया है और इसके जरिए वे आपके कैमरा, आपके माइक, फोन का जो माइक होता है और फोन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो है उसके निगरानी में आ जाते हैं, उसकी पोजीशन में आ जाते हैं। ये किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं सर, देश के कई सांसदों के साथ हुआ। और दिलचस्पी की बात यह है और खतरनाक बात मैं कहूं वो ये है कि ये सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ हुआ, ऐसा जानकारी आई और इसमें एक शायद सत्ताधारी पक्ष के भी सांसद थे। ज्यादातर जो लोग इसमें पाए गए, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके मुताबिक विपक्ष के या सरकार के आलोचक थे। ये एक बड़ा खतरनाक हमला फोन्स पर हुआ। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसमें जांच करे, आपके अध्यक्षता में सर वो जांच हो सके तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो कि किस प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स पेगासस नाम के और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जो लोग आप कह सकते हैं आलोचक हो सरकार के या विपक्ष के नेता हो, उनके फोन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस बिल का मैं विरोध करता हूं और चाहूंगा कि ये जो एप्पल का नोटिफिकेशन यहां बैठे कई सांसदों, विपक्ष के सांसदों के फोन पर आया, उसके बारे में सरकार कुछ अपनी बात भी रखे और इस पर जांच भी बिठाए। थैंक यू राघव जी। माननीय श्री निरंजन विसी, माननीय निरंजन विसी। Thank you, Honorable Vice Chairman sir, for giving me an opportunity to speak on the Post Office Bill 2023. Sir, the Post Office Bill will abolish the 125th year-old the Indian Post Office Act 1898. By virtue of this bill, the work of the Post Office can be easier. The bills aim to modernize postal services and merge them with Digital India. This includes offering online shopping, e-commerce solution and digital payments. For this, I would like to congratulate our Honorable Minister of Communication, Sri Ashwini Vaishnav ji. Sir, the bill seeks to utilize the wide network of post offices to provide banking and insurance services closer to the poor, ST, SC, women and farmers, which will boost rural development. There is a possibility of creation of jobs through expansion of postal and financial services, especially in rural areas, which can contribute to economic growth and reduce employment. But sir, the central government will appoint the officer if that officer feels that any parcel is against the security of the nation or can disturb the peace, then that officer can stop the parcel, open it and check it, and can confiscate it, and later such items can also be destroyed.
but law and order is a state subject, sir. So the state government should empowered to verify the articles. The bill makes India's postal services globally competitive and will boost trade and facilitate international delivery and logistics, and also promote financial inclusion in rural areas, which will promote rural development. But, sir, there are 272,000 Gramin Dak Sevaks in India, working in 156,000 post offices, branch post offices. They call the GDS Gramin Dak Sevak, also known as postmaster, branch postmaster, and Dak master in our rural areas. But, sir, they perform the duty of postal life insurance, rural postal life insurance, India Post Payment Bank, Sukunya Samruddhi accounts, Mahila Samman accounts, delivering letters, parcel, articles, collecting and depositing of premium regularly. The Gramin Dak Sevak also distributing pension, stipend, wages of NRGS, wages of candle leaf pluckers in rural areas. But, sir, the Gramin Dak Sevaks are not provided with traveling allowance or dinner's allowance or house rent allowance or pension or medical allowances, educational allowances for their children, leave benefit like regular employees of postal department. Sir, the GDS, Gramin Dak Sevak, those who are working in rural areas, they are doing more than 8 hours duty, but in some areas, some villages, there are no internet service, and most of our Odisha, in our Odisha also, in rural areas, in western Odisha and southern Odisha, there are no post offices in various big villages and panchayat offices, and also, sir, there are no internet connectivity. So the postmasters are the postmaster, branch postmaster, Dak masters, they are facing a lot of problems because they are using the digital mode services. So therefore, sir, I request our Honorable Minister to conduct survey in rural villages, rural areas, to provide better service for the farmers and women self-help groups and the students living in the forest villages, rural areas, and to make provision of internet connectivity and also communication facility. Sir, I draw the kind attention of Honorable Minister of Communications, Sri Ashwini Vaishnavji, through you, sir, that the GDS, the Gramin Dak Sevak, the postmaster, branch postmaster, should be provided with departmental status and their service should be regularized. Also, their insurance benefit, group insurance benefit and gratuity should be enhanced from 1.5 lakh to 5 lakhs. Encashment of unutilized leave bill for 180 days, and increase service discharge benefit scheme from 3% to 10%, sir. And, sir, the implementation of the recommendation of Kamalesh Chandra Committee report in favor of the Gramin Dak Sevak. The committee observed that the postal department depends on the successful management of the Gramin Dak Sevak. So, the Gramin Dak Sevak are the soul of postal department, sir. And it is difficult to survive without a soul. So their demand be fulfilled. Sir, with this, on behalf of my party BJD and my leader, Honorable Chief Minister, respected Sri Naveen Patnaik ji, I support this. Thank you. Mani Sri Ajodhya Rami Reddy Ala. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to share a few of my thoughts on the proposed amendments to the Post Office Bill 2023. Sir, there haven't been any amendments to this colonial
Act in the past 125 years, and I appreciate the introduction of such an essential piece of legislation in Parliament. There are few positives of this amendment. This bill increases the authority of the central government to intervene in such situations involving vital aspects such as security, maintaining public order, responding to emergencies, and ensuring public safety. More specifically, the bill allows for the interception, examination, or temporary detention of any item in transit through the postal system under the aforementioned circumstances. Such a provision can be a game changer in terms of countering illicit smuggling and unauthorized transportation of drugs and contraband products via postal services. Thus, I applaud this positive approach in addressing the evolving nature of threats and risks associated with the postal network. Flexibility in pricing. There is also an enhanced pricing flexibility is considered in this bill, which is critical, especially in the context of an increasingly competitive business, which lets the postal services promptly respond to the market's ever-changing expectations. Furthermore, the service's independent pricing allows it to stay adaptable in the face of changing economic situation. The ability to alter service charges and pricing structures allows the department to ensure that its service remain affordable, accessible, and sustainable, even with economic conditions getting changed. In essence, this empowerment aligns with the Postal Department's mandate to deliver a diverse spectrum of citizen-centric services. Also, generalizing the nomenclature of interception of parcels. Sir, in contrast to the outdated provisions of the existing 1898 Act, the bill introduces significant shift in its approach to the interception of objects within India's postal system. The key distinction is in the usage of technology, wherein the present Act explicitly defines seized postal products as those carrying explosive, dangerous, filthy, noxious, or deleterious substances, while the new bill, on the other hand, has broader and more inclusive phrasing. Recent data shows an increase in security threats and illegal activities related to postal system, not only in India but also globally. This purposefully change in terminology serves an important purpose as it broadens the scope of interception beyond the constraints of specified items, embracing a broader range of potential security threats and criminal activity involving mail shipments. By taking a more general stance, the measure recognizes the changing nature of security concerns. However, there are certain problems pertaining to this bill, and I would like to highlight a few of them, and I provide my suggestions to this. Powers relating to interceptable postal articles. It lacks procedural safeguards, raising concerns about potential violation of individuals' freedom of speech, expression, and privacy. Additionally, the ground of emergency as a basis for interception may surpass reasonable restrictions outlined in the Constitution. The term emergency lacks a precise definition, providing a broad scope for interception. This goes against constitutional principles established by the Supreme Court and requires more clarity. Exemption from liability for lapses in services, that also need to be looked at. The removal of offences and penalties. The absence of provisions for offences and penalties as they were removed in Jan Vishwas Act 2023 remains another issue. As per the earlier Act, various offences committed by officers of a post office, which included the illegal opening of postal articles by a postal officer were punishable. However, now such actions would have effectively no consequences. It raises questions about ensuring the privacy of individuals and may have adverse implications. Regulation of courier enterprises. Although the bill gives India Post Authority to improve its postal service operation, it is critical to recognize that regulatory environment for courier enterprises is still relatively underdeveloped. This regulatory void presents a number of significant questions. Issues faced by the employees of the department, my other colleagues have mentioned, I want them to be taken note of that. The key issues affecting the functionality of the system also need to be taken into consideration, like,
the post offices lack necessary infrastructure to function successfully as points of service and information transformation. Issues such as intermittent power supply, outdated manual operations, limited accessibility shall still remain a problem. The revenue deficit also need to be taken into account. So, while I see that there are few issues that where we have given suggestions, but we strongly believe that this amendment is coming at the right time. The passage of this bill is an important step in the restructuring of India's postal services. By repealing outdated restrictions, this act guarantees that India's postal industry stays dynamic and inclusive, successfully adapting to the encouraging changes of requirements of its varied population. With this support from YSR Congress Party, we support this bill. Thank you, sir. Thank you, Manya Jodhya Rami Reddy ji. Honorable Shri A. Rahim. Honorable A. Rahim. Thank you, sir. Thank you for this opportunity, sir. I express my deep concerns and critique over Post Office Bill 2023. My objections against this bill are very specific. Sir, my first point is that this bill is against the Constitution and breaching the fundamental rights provided by the Constitution. Secondly, this bill is against the federal principles. Thirdly, through this bill, government is giving up the liabilities invested upon them. My fourth and final point is about the concern over the privatization of the postal services. Sir, I would like to start from my last point. Sir, I am bringing your attention to the objects and reasons for this bill, which states that this bill facilitates the evolution of postal services. In the light of these lines, through you, I would like to ask the Minister that what the Modi government has done for the prosperity of the postal services. Sir, I would like to expose that since 2014, not even a single post has been created in the postal services. Sir, also I would like to remind, I would like to remind all of you that as of now, 90,000 existing posts are lying vacant. Sir, is this the evolution and prosperity of the postal services, sir? Sir, in this context, I have a deep concern over the privatization of the postal department. Sir, it is evident that when it comes together, non-creation of posts, lack of recruitment, with the introduction of this bill, paved the way for the privatization. Sir, now I am coming to my next point, is that according to clause 10 of this bill, sir, which states the bill has a significant omission concerning the consequences for officers who misappropriate or damage postal items, which used to be punishable offences, but is not addressed in this bill. Sir, this oversight will negatively impact the department's efficiency and the integrity of the officers involved, eroding trust in the services provided. Sir, my third point was that the bill is against the federal principles. Sir, this is the new normal phenomena of the Man Ki Baat era. Under the Modi regime, against the federalization, trying to, this is new normal. This is new normal in the Man Ki Baat era. The bill removed the authority of state government or their authorized officers to intercept a shipment, wasting this power entirely on the union government or its designated officers. Sir, this is a direct attack on a federal principle. Sir, just 1 minute. Sir, I am going to my first and my prime point. Sir, this bill, according to the existing law, sir, this bill intentionally trying to breach the privacy. Sir, as we know that, according to the Constitution of India, privacy is part of our life. So privacy is the main thing, the fundamental right. So fundamental right. Sir, I would like to add one more thing, that the government is trying to change the grounds for interception. Sir, the interception of the shipment and the government, according to this bill, intentionally trying to breach the privacy,
So this government, I would like to conclude my saying that we have to right to protect our privacy and urging this Augusta House to omit the centralization and privatization tendencies of the Post Office Bill 2023. Thank you. Thank you, sir. Honorable Sri Abdul Wahab. Honorable Abdul Wahab ji, not present. सुश्री कविता पाटीदार जी, सुश्री कविता पाटीदार। माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पर बोलने की अनुमति प्रदान की। महोदय, जैसा हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस बहुत समय से पुराने धर्रे पर चले आ रहे थे। डाकिया डाक लाया वाला हम गाना भी हमने सुना था, हमने देखा भी है, और वर्तमान समय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो काफी नहीं था। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि जिनके द्वारा इस बिल को सदन में लाया गया, और इस बिल में ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं जिसके कारण लाखों लोगों का भरोसा पोस्ट ऑफिस की तरफ और बढ़ेगा। माननीय महोदय, हम जानते हैं कि पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक केंद्रित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। आज पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ लोगों तक डाक पहुंचाने का नहीं रह गया है, बल्कि आधार सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, पार्सल पहुंचाना, पेंशन पहुंचाने का, ऐसी कई सुविधाओं को देने का काम भी आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं, खासकर पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों में इजाफा किया जाना। इस बिल के माध्यम से उन्हें सेवाओं से जुड़ी जरूरी नियम बनाने की छूट होगी। वे मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्ज की दरें तय कर सकेंगे। अभी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बिल से लोगों की प्राइवेसी पर खतरा है, जबकि मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि इस बिल में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल के माध्यम से अगर अधिकारी को लगता है कि पार्सल के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो अधिकारी के पास ये शक्ति होगी, वे खुद पार्सल को खोलकर देख सकेंगे और उसे रोक सकेंगे और जब्त भी कर सकेंगे। ये किसी प्राइवेसी पर खतरा नहीं, बल्कि इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया गया है। साथ ही यदि किसी पार्सल को डाक का अधिकारी अगर संदिग्ध पाते हैं या उसकी ड्यूटी नहीं भरी गई हो या उसमें किसी तरह का कोई गैर कानूनी सामान हो, तो डाक अधिकारी सीधे कस्टम विभाग को सूचित करेगा, जिसके बाद कस्टम विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और इसकी बिक्री से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले 9 वर्षों में डाकघर को माननीय मोदी सरकार द्वारा एक जीर्ण होती संस्था से ट्रांसफॉर्म करके विकसित बनाया गया है। न सिर्फ डाक सेवाएं बल्कि 100 से अधिक सिटीजन सेंट्रिक और वित्तीय समावेशन सेवाएं डाकियों द्वारा आज नागरिकों के घर द्वार पर दी जा रही है। जहां 2004 से 2014 तक 660 डाकघरों को बंद किया गया था, वहीं मोदी सरकार द्वारा 2014 से 2023 तक 5000 नए डाकघर खोलने का काम किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5746 और नए डाकघर खोले जा रहे हैं, जिससे देश के कोने कोने में जन सामान्य तक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सुगमता से पहुंचाई जा सके। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में डाकघर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे वह बेटी बचाओ अभियान के तहत लाई गई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते हो या महिला सम्मान बचत पत्र हो या डाकियों द्वारा घर घर जाकर खोले गए खाते हो। आज डाकघर महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। 26 करोड़ बचत खातों के साथ डाकघर आम जनता के लिए बचत की एक भरोसेमंद संस्था बन गई है, और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। डाकघर बचत केंद्र और डाक जीवन बीमा में जनता के कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपए जमा है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 वर्षों में ही 8 करोड़ खाते खोलकर मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया है। इसके विपरीत पिछली सरकार द्वारा खोला गया
भारतीय महिला बैंक हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के कारण मात्र 3 साल भी नहीं चल सका। डाकघर विधेयक 2023 एक बहुत सरल लेजिस्लेशन है और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को सुनिश्चित करने का प्रयास है। यह डाकघर को और अधिक सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा, ऐसा हम सब आश्वस्त हैं। पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री कविता पाटीदार जी। ऑनरेबल वी विजय साई रेड्डी। Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you for giving me an opportunity. And we should appreciate the Honorable Union Minister for Communication for introducing this bill, Ashwin ji. Sir, this bill is a step towards 3 pillars of good postal service. One is reliable, and second is reach, and third is relevance. Sir, however, I have 3 suggestions to be made to the Honorable Minister, if Minister permits me. The first one is rethink pricing to increase the profitability. Sir, over the last decade, the loss incurred by the postal service has increased at least 9 times. Sir, the postal rates must be reconsidered to ensure that the subsidies for the poor do not go to the rich. And this causes the huge financial deficit. If you can ensure that the subsidies what you are offering in so far as postal services are concerned do not go to the rich, and it will get into the profit arena. Sir, the next point is pricing structure has to be rethought. Differential pricing, it is now uniform pricing. The differential pricing based on the location, there has to be a differential pricing, those post offices which are located in the rural areas, and differential pricing to those post offices which are located in urban areas. And the subsidy only those post offices that belong to the rural and economically weaker sections. So these sections and also regions. This will ensure the profitability, improve the profitability. Next point is digitization of services. Sir, the government should try to replace as many traditional services offered through digital solutions. For example, mobile transfer can replace money orders, and small saving activity can be redirected to the payment bank, and computers must be installed. Must be provided to all the post offices, and centralized software throughout the country for postal, banking, insurance and retail services in the post offices, which will facilitate insurance of train reservations, tickets, Aadhaar enrollment, updation of services. All these things will improve the profitability and also the quality of service to the rural areas, sir. Rural people. Sir, the third point which I would like to suggest, third suggestion which I would like to make to the Honorable Minister is payments bank and financial services in rural areas. The conception of India Post Payments Bank is a sound step and must be expanded through the training of the existing staff, thorough training of the existing staff to sell financial products like insurance, mutual funds and in the rural areas. This proves our commitment to sustainable financial inclusion and citizen empowerment. Post offices can be integrated with ENAM, E-N-A-M, that is E-National Agricultural Market Initiatives, where terminals can be kept in these offices for use by the farmers. So this is very important suggestion, sir. Sir, further, sir, Doc Sevaks can be used to also form a link with the agricultural markets, that is ENAM markets, that as they have direct interface. These Doc Sevaks have a direct interface with the farmers and can be given the responsibility of spreading awareness as well as being the link with the markets, sir, market prices, sir. With these aspects, suggestions, we support the bill and I commend the bill, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mani Vijay Sai Reddy ji. Honorable Sri Kanak Medla Ravindra Kumar ji.
Please. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I am very thankful for giving this opportunity to participate in the discussion. Sir, at the outset, I extend the support and welcome the bill. Sir, this bill intends to replace the earlier Indian Post Office Act passed year in 1898. Section 16(1) of the bill provides for repealing the earlier act. Sir, over the period of time, post offices across the country are providing a variety of services. People approach post offices for making Aadhaar card. Post offices are extending financial services. ATMs operated by post offices are in vogue nowadays. Sir, the earlier act mainly deals with mail services provided by the post offices. In the modern world, mail services are replaced by email services. Postcards are used rarely. Telegram service has been winded up by the government. Nowadays, only the government offices and its attached organizations, postal service are used for communication, official intimations, decisions, orders, etc. Under these circumstances, also with a necessity to appropriately use the existing human resources with the postal department, the government has brought this comprehensive bill. I welcome and support it. Though I welcome and support the bill, I have concerns which I hope that Honourable Minister, who has an able administrator, earlier take into consideration and resolve them. Section 3(1) says, what the services of the post office has to render will be decided by the central government. This section gives sweeping power to the central government. This, in view of the federal structures, this type of trend has to be checked out. Then Section 9(1) empowers the officer of any central government to intercept, open or detain any item or deliver item to customs authority. Such power will hamper the administration and will lead misuse of power and also the privacy of the public. So this section needs a relook. Sir, the bill aims at revamping the entire postal system. All the necessary arrangements that are proposed has to be kept in the bill itself instead of making the rule in this regard by the executive. I earnestly appeal the government to consider the above suggestions and take appropriate decision, make necessary amendments. With these vital submissions, I once again extend my support and felt gratitude for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Honourable Member. Shri Ghanshyam Tiwari ji, 12 minutes. माननीय उपसभापति महोदय, आज ये बिल जो लाया गया है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी युग प्रवर्तक हैं। एक युग से सैकड़ों सालों से जो कानून पड़े हुए थे और जिन कानूनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, युगानुरूप उन कानूनों में परिवर्तन करने का साक्षी ये राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। और उसी प्रकार से इस बिल को लेकर आए हैं माननीय अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार का अर्थ है देवताओं के चिकित्सक। तो ये देवताओं के चिकित्सक होने के साथ साथ रेलवे के, पोस्ट ऑफिस के और BSNL के चिकित्सक बन गए हैं। ऐसा बढ़िया बिल लेकर आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बिल में दूसरी जो बहुत बड़ी बात अच्छी है, जिसमें उन्होंने कहा है, भगवान कृष्ण ने तो ये कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि 4 वर्ण की मेरी सृष्टि है। लेकिन मोदी जी ने कहा है चातुर्जाति मया सृष्टम, कि मेरी सृष्टि में 4 जातियां हैं, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। ये 4 जातियां उनकी है और ये चारों जातियों को ये हेल्प करने वाला बिल है। उदाहरण के लिए माननीय मैं उपसभापति महोदय में कहना चाहता हूं कि एक बात की, केवल इस बिल के एक बात की प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आलोचना की, वो सेक्शन 9 और 10 के बारे में। वो कह रहे कि इंटरसेप्ट करने का अधिकार क्यों है, ये प्राइवेसी पर हमला है। और इससे भाई इस देश में प्राइवेसी है पर इस देश की सुरक्षा भी है। अपने बहुत बार देखा है
जब पार्सल बम जाते थे और जगह जगह बमों के धमाके होते थे। इस देश में अब बमों के धमाके होना शहरों में बंद हो गया है, पार्सल में धमाके होना बंद हो गया है, तो आइंदा आगे धमाके नहीं हो, इस काम के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, आज जब जन धन खाते खोले गए थे तो कहा गया था ये बिना उसके खाते खोल रहे कहां से पैसे आएंगे। आज उन खातों में कितने रुपए जमा हो गए। आज गांव का गरीब आदमी पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में जाकर अपना खाता खोल सकता है, अपना काम कर सकता है। उसके पहले तो उन्होंने तो इस पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को बंद करने का मानस बना लिया था, पोस्ट ऑफिस बंद करने लग गए थे। तो एक जो मृतप्राय संस्था हो गई थी, उस संस्था को जीवन दान देकर उसको नया स्वरूप दिया है, उसको परिष्कृत किया है। उसके परिष्कृत करने को ये बिल है, इसमें 16 प्रावधान किए गए। तो 16 श्रृंगार होते हैं अपने यहाँ पर शास्त्रों में, तो 16 उपबंधों के साथ इसके श्रृंगार किए जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के। तो ये श्रृंगार करने का जो बिल है उसको वो श्रृंगार से भी बचाता है। तो मैं इसलिए श्रृंगार बोल रहा हूं कि इसके पहले कहा गया कि कबूतर पहले प्रेम का संदेश लेकर जाता था, हमारे यहाँ पर गाए जाते कुर्जाएं थारा भंवर मिला दे, मेरा भंवर मिला दे, तो कुर्जा गाई जाती थी, तो कबूतर के गाए जाते थे। यहाँ तक होता था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल। लेकिन अब तो वो खत जाता ही नहीं, इसलिए अब ये लोग कई बार चर्चा करते हैं कि साहब इसमें प्राइवेसी खत्म हो जाए। भाई ईमेल का इनका जमाना, लोग ईमेल करते रहते थे, रोज चैटिंग करते हैं, हाय हेलो करते रहते हैं, इसमें किसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है। ये तो बिल्कुल एक इस प्रकार का बिल है जिस बिल में इसके बाद में सरकार के आने के बाद में 1 लाख लोगों को नया रोजगार इसमें दिया गया है। 5,000 से 7,000 ज्यादा नए खोले गए हैं। इसके अलावा पासपोर्ट बनाए गए हैं। गांव में पासपोर्ट बनने की कौन सोचता था। पासपोर्ट बनने के लिए शहर में जाकर लाइन लगाओ, एमपी की सिफारिश कराओ, एमएलए की सिफारिश कराओ, इतना नाटक करो, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, मानसिक विकृति की समस्या है। लगातार कोई आदमी हार का सामना करे और लगातार उनकी बातें उनके खिलाफ आए तो वो बैठ जाता है, और बैठ जाने के बाद में वो बोलता है फर्जी डिग्री। अरे किस पर चर्चा हो रही है? ये चर्चा हो रही है पोस्ट ऑफिस के बिल पर। लेकिन जो प्रहार हुआ है कल, जो राजस्थान हिंदुस्तान की जनता ने जो प्रहार किया ना, उसे विचलन हो गया है। उस विचलन के कारण से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने केवल ये एक बिल लेकर नहीं आई, अब 3 बिलों की भी आज चर्चा की गई जो अपने यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। सारे कानूनों में संशोधन होना है। जन विश्वास कानून लाया जिसमें 43 कानूनों में संशोधन किया, और उनमें जो आपराधिक सजा के प्रावधान थे वो खत्म किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग लाइफ, इसको करने के लिए सारा काम किया गया है। और ये सारा युग परिवर्तनकारी काम है, और युग प्रवर्तक के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए सदन इस बात का साक्षी है कि इस पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से हम आतंकवाद को नियंत्रित करने की बात करेंगे। हम गांव में पासपोर्ट बन जाए उसकी मांग करेंगे, गांव में खाता हो जाए। अब आप गांव से एक्सपोर्ट हो रहा है, कई नाम माननीय मंत्री महोदय ने बताए। इस प्रांत के इस गांव से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 40 देशों को निर्यात किया जा रहा है। इसलिए ये सारा बिल मैं समझता हूं कि सब योग्यताओं के साथ और बहुत संक्षिप्त विधेयक और आगे के लिए आगे की बातों को ध्यान करने के लिए। दूसरी बात ये कही गई कि ये कंपटीशन का नहीं है। आज कोरियर सर्विसेज हैं, आज कई लोग हैं ये पीएसयू आवश्यक है, सरकारी कुछ होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए रेलवे में कितना सुधार हुआ। आज रेलवे के प्रोडक्शन में जब प्राइवेट भागीदारी बढ़ी
तो रेलवे का कितना सुधार हो गया, पोस्ट ऑफिस में कितना सुधार हुआ है, डाक सेवाओं में कितना सुधार हुआ है। ये सुधार के लिए आज कोरियर सर्विसेज है, तो कोरियर सर्विसेज से भी बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए ये सारा जो विस्तार का काम है, वो विस्तार का काम करने का जिम्मा इस सरकार ने लिया है, क्योंकि पिछले बारों में जो सरकार थी वो तो लीक पीटती थी कि ये बिल बना हुआ है, इसमें ये अमेंडमेंट कर दो। ये सरकार जो है वो बिलों को नए स्वरूप में लेकर आ रही, आज की आवश्यकता के अनुसार, आज के समय के अनुसार, और भारत का बढ़ते हुए स्वरूप और भारत की आगे की आवश्यकताएं, उन सब कामों को लेकर ये बिल लाया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को भी इस बिल के लिए धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में माननीय उप सभापति महोदय 11,000 से अधिक पंचायत और 44,000 से ज्यादा गांव हैं। उन गांवों तक कोई बैंक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन पोस्ट ऑफिस उस गांव-गांव तक पहुंचा गया है, और उस पोस्ट ऑफिस में गांव-गांव का आदमी अपना सेविंग बैंक का अकाउंट खोलकर, अपना पासपोर्ट बनाकर, अपना रुपया लेकर अपना एक्सपोर्ट करने का काम कर सकता है। इस प्रकार का अच्छा विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी। I was attending a parliamentary committee meeting, that is why I was delayed. Sorry for that. And during the time also the committee meeting is coming, there is also another problem. Anyway, I am opposing the bill for the reason that after a long time such a bill came and it was needed and warranted, but some provision in that one is the bill allows employees to open postal parcels in the interest of national security. But all other agencies, then it is people will allow to go to other agency because we are sure that they will open, and even if security, non-security, that will be a practice. And there is no provision which says the post office and its officers shall be exempt from any liability by any reason of any loss, misdelivery, delay or damages in the course of providing service. How can you give this completely open hand? Give some restrictions somewhere. And flexibility to post service to fix prices, compete with the fiercely competitive industry. Definitely there is competitive industry, courier service and all. So government should be, this is not a governmental business, it should be for the benefit of the public. So there should not be such what you call private, in the name of competition, they cannot fix any right. Indian Postal Service is known for its service before, and it should continue. The reason for I am opposing the bill is no privacy on the letters and parcels sent by clients. There are no consequences for unauthorized opening of postal articles, no liability on post office or on laws. The price of Indian Post Service may go unaffordable to common people. That's why I am opposing this bill. Thank you very much. Manya Dr. Fauzia Khan ji. Thank you very much, sir. So the intent of this bill ought to have been the strengthening of the network of the postal services framework in India to make it more robust, modernized and speedier. But the legislative intent of the bill doesn't seem to be anywhere near these objectives, sir. It's like trying to fit a giraffe into a mailbox. It aligns more with the plan to turn us into the most surveilled nation. Sir, in the current scenario in India, there has been an erosion of trust in almost all government-provided services. The diminution of this trust has led to more inclination towards private services. Sir, the proposed bill should not solely focus on transforming post offices into financially viable entities, but it should also emphasize the need for operational efficiency. It is important to position them as the preferred choice of the public. Sir, ज़माना अब बदल गया है और जैसे घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि अब हमारे पत्र
कबूतरों के माध्यम से नहीं जाते हैं यहाँ वहाँ। मिर्जा गालिब ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो जो लिखेंगे जवाब में। तो ये जो धीमी धीमी रफ्तार थी वो अब नहीं है, क्योंकि जमाना तेज हो गया है। अब जीवन जितना गतिमान हो गया है, पोस्टल सर्विसेज को भी उतना ही गतिमान होना होगा। प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के स्पीड को मैच करना होगा। Sir, private services, by the way, have not been brought within the purview of this act, and I wonder why. My point number one is, why do we need these services? I think the department has to make proper utilization of the growing needs of digital banking services. That's why this has come in. But we still have to talk a lot about infrastructure, how to modernize this infrastructure. Nothing like this has been mentioned in the bill. Then why is the burden of pricing being shifted entirely to the postal department? Do we have any ceiling on this? The bill specifies no mechanism on how the prices are going to be regulated by the department, sir. Our focus ought to be improving services for the public and not making money. Sir, the Act exempts the government from any liability related to theft, misappropriation, etc., which has been expressed by many of us. Officers are also exempt from all liability. In fact, the Jan Vishwas Amendment Provisions Act 2023... Honourable Member, please conclude. Please conclude. Take 30 seconds, conclude. All right, sir. So, what I want to say is that officers have got an immunity shield and they may indulge in corrupt practices through it. And we are left with our privacy dancing in the monsoon rain without an umbrella. So I think, sir, it is important that we are concerned about privacy, we are concerned about security concerns are all right, but we cannot undermine the need for privacy. Thank you, sir. माननीय श्री लाहर सिंह सिरोया जी। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इस बिल पर बोलने के लिए बुलाया और मैं पार्टी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया है आज। ये बिल, अध्यक्ष जी, मैंने देखा है जो 125 वर्ष पुराने कानूनों को बदलकर नए कानून लाए जा रहे हैं। और आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस संस्था हमारे दिल से जुड़ी हुई है वर्षों से। आज उसको उन्होंने बचाए रखते हुए उसको आधुनिकीकरण पे ले जा करके आज उसका मैं आपको एक दो उदाहरण देके बताना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, मैं उपाध्यक्ष जी, मैं वैसे तो IT सिटी बेंगलोर से रह रहा हूँ 50-55 वर्षों से, और IT सिटी बेंगलोर से आया हूँ जो देश की IT राजनीति के रूप में जानी जाती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हमारा शहर बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन मेरा बचपन राजस्थान के गाँव में बीता है और मेरा बचपन विशेष रूप से जो 5-6 वर्ष का जब तक था, मैं मेरे ननिहाल में रहा तो एक हफ्ते में एक बार डाक आया करती थी और पूरी एक लाइफ लाइन थी पूरे गांव के लिए। और वो डाकिया इतने समर्पित होते थे कि जो गांव में जो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको चिट्ठी पढ़कर सुनाया करते थे। तो ये डाक संस्था जो है हमारे दिल से जुड़ी हुई है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है और गांव की लाइफ लाइन है। जो मेरी उम्र के जो लोग हैं इस बात को मैं समझता हूँ, जानते होंगे। तो ये और एक और बताना चाहूँगा, आज जो हमारा चरित्र निर्माण हुआ है, आज जो इस सदन में जिस वजह से मैं पहुँचा हूँ, उसमें हमारे बचपन में जो हमें साहित्य मिलता था, मुझे याद है कि गोरखपुर में जो हमारी संस्था है गीता प्रेस, वहाँ से कल्याण नाम की पत्रिका आया करती थी और हमारे पिताजी उसके ग्राहक थे, नियमित ग्राहक थे। तो हर महीने वो कल्याण पत्रिका हमारे घर पर आया करती थी और उस पत्रिका को हम पढ़ते थे बचपन में। और कोई हमारे पूरे से देश के जोड़ने का में कोई और तरीका नहीं था हमारे पास में।
तो उस कल्याण में हमने पढ़ा कि तमिलनाडु में तिरुपल्ली कुंड्रम नाम का कोई पक्षी तीर्थ है, तो पूरे देश से जोड़ने का हमें अवसर मिलता था। और जो पत्र पत्रिकाएं जो महीने की आती थी वो डाक से आया करती थी, और चिट्ठी आती थी जो से डाकिया डाक लाया, आपने सब कुछ कहा है, तो उसका तो मैंने भोगा है, अनुभव किया उस बात को। तो ऐसी डाक संस्था को जो करीब करीब समाप्त होने जा रही थी विकास और आधुनिकीकरण की वजह से, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से, तो हमें लगता कभी ये विलुप्त नहीं हो जाए। तो इस डाक संस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया रूप दिया, उसके साथ कई नए कार्यकलापों को जोड़ा गया, जिसका वर्णन हमारे लक्ष्मीकांत जी ने कहा है और भी हमारे साथियों ने कहा है। चाहे ये पासपोर्ट वाला हो, ये डिजिटल पेमेंट वाला हो, सेविंग बैंक्स वाले हो, इंश्योरेंस हो, कई तरह की चीजें पोस्ट ऑफिस से जोड़ा गया। और आपने देखा होगा 1.5-2 वर्ष पहले जब पूरे देश के पोस्टमैनों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब उनको उद्बोधन दिया था, उनको संदेश दिया था, उस समय मैं भी उस एक किसी कार्यक्रम में मौजूद था। तो जो उस जमाने के जो हमारे पोस्टमैन आते थे, हमें चिट्ठियां पढ़ के सुनाते थे, उसका दूसरा रूप हमें देखने को मिला है। जब मैं अभी बेंगलोर आ रहा था 2 दिन के पहले, मैं मेरे घर के बाहर खड़ा था, एक स्कूटी में एक बालिका आई, पीले ड्रेस में थी। मैंने कहा कौन है, तो वो एक चिट्ठी देने आई मेरे को, पोस्ट हमारे कोई सरकारी चिट्ठी या पता नहीं कोई चिट्ठी थी, जो मेरे को देखा, मेरे घर के बाहर स्कूटी खड़ी की। तो महिलाओं को और इस तरह से जिनको रोजगार इतना मिला है उसका साक्षी है हम। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो उसमें हमने आंखों से देखा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्पना का ये है कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस जो इस संस्था को इसको बहुत आगे बढ़ाया और आधुनिकीकरण के रूप में लेकर के आज इसका जो लाखों कर्मचारियों को एडिशन किया। और पोस्ट ऑफिस में जो आज जो चहल पहल दिखाई दे रही है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अपने नए इस धरोहर को नए युग के साथ जोड़ने का जो उनका हमेशा ये कल्पना रही है, हमारी हर धरोहर को हर जगह उसको कैसे आधुनिकता के साथ जोड़ करके उसका कैसे देश के लिए उपयोग किया जाए, ये हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विषय रहा है। और ये जो मैंने इसको विस्तार से इसको देखा है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, इसको आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने जो संजोग से मेरे पड़ोस के जिले के ही गांव के हैं, हालांकि लोग उनको उड़ीसा का भी समझते होंगे, लेकिन उनका जो जिला है मेरे पड़ोस के उस गांव के हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से, मैंने एक का एक देखा है और हमने पहले भी स्टडी किया है, जो हमारे कमेटी में चर्चा में भी आए हैं ये विषय। तो जिस विस्तार से उन्होंने ध्यान रखा है, अपनी इनको जिम्मेदारी सतर्कता की ध्यान रखा है, जिम्मेदारियों का ध्यान रखा है, और उसके पोस्ट ऑफिस के अधिकारों का ध्यान रखा है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और वो नियमावली कैसे बने। अब ये कुछ लोगों को बात में इमरजेंसी दिखती है, ये कि ये इमरजेंसी में क्या होगा, इमरजेंसी में क्या किया नहीं हुआ। चिदम्बरम साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनको पता है क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या किसने किया। और उसमें तो आर्टिकल 356 भी प्रावधान है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में कई लोगों की मांग होते हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस ने मांग की थी कि उसमें वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कई जगह से मांग उठी, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखते हुए, अपने आजादी का ध्यान रखते हुए, आज तो एक दिन भी किसी भी राज्य में 356 जरूरत होने के बावजूद भी नहीं लगाया और संयम रखा। और कांग्रेस कितनी बार 356 का उपयोग किया है। आज खड़गे जी साहब नहीं है, मैं समझता हूं कि आज तो होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो कितनी बार उन्होंने 356 का उपयोग किया, बिना कारण के किया। और ये हार जीत चलती रहती है, उनको इतना ये डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना को कंसोलेशन दे दिया गया है, वो हमारी गलतियों से, और समझो कि वहाँ पे जो भ्रष्टाचार का वो चल रहा था, उसके चलते वो सरकार को जाना पड़ा। कोई ये इनकी जीत नहीं है, उनकी हार है, इनकी जीत नहीं है, उनकी हार है। तिवारी साहब, आप आगे, तिवारी जी आगे बढ़िए, आप पार्टी के अध्यक्ष बनिए, मैं समझता हूँ आपके नेतृत्व में ज्यादा सीटें आएगी। माननीय सदस्य, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, प्लीज 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 एड्रेस द चेयर प्लीज। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अधिकारियों ने वैष्णव जी के नेतृत्व में बहुत विस्तार से इस बात का ध्यान रखा है, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रोविजन का
इसके लिए किसी का अधिकारों का हनन नहीं होगा। ये सरकार बहुत ईमानदार सरकार है और ये कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने वाली है। आप विश्वास रखें, आपको चोर के दाढ़ी में तिनका दिखता है, उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। आपका वहम का इलाज तो नीम हकीम के पास भी नहीं होता है। आप ये वहम करना बंद करें। और हमारे मित्र चले गए हैं शक्ति सिंह जी, वो जहर कर रहे थे बार बार। अरे अब तो जहर उगलना बंद कीजिए। बहुत देश में जहर फैला चुके थे आप, उसको हम दोते हमारे को इतने वर्ष हो गए, अभी पुरानी तौर। अब ये जहर फैलाना बंद कीजिए। ये जातिवाद का, क्षेत्रीयतावाद का, भ्रष्टाचार का इस जहर को अब अपने रखिए और उसको कम से कम सदन में तो नहीं फैलाएं। किस जहर की बात कर रहे हैं? ये पूरा देश है। मैंने कहा ना, मेरे बचपन में जब मैं 5-7 साल का 10 साल का था, तब हमने तिरुक्कली कुंड्रम का नाम, पक्षी तिरुत्तल नाम हमने राजस्थान के गांव में सुना। वो किसकी वजह से सुना? ये डाक संस्था की वजह से सुना। अगर डाक के सिवाय कोई हमारे गांव में कोई लाइफ लाइन नहीं था, किसी चीज का कोई हमारा संपर्क नहीं हो सकता था, तो उस जमाने से हम आए हुए हैं। तो इस डाक संस्था को आज उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर उन्होंने जो संस्था को आधुनिकीकरण करते हुए आज पोस्ट ऑफिस को घर घर में प्रचलित किया है। कितनी सेवाएं मैं गिना सकता हूं, अगर आपके पास मुझे समय दें तो कितनी मैं सेवाएं गिना सकता हूं। और मैं समझता हूं कि ये कई कानूनों को चेंज किया, जैसे हमारे घनश्याम जी जिक्र कर रहे थे। इन सारी बातों को मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें जो है उसमें कहना उल्लेखनीय यह है कि इस पोस्ट ऑफिस में जो सेवाएँ चल रही है उसमें आज भी आप देखो, हम सब लोग शहर में बैठे हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाला आज भी इस पोस्ट ऑफिस के आश्रय पर जी रहा है। तो इस पोस्ट ऑफिस की संस्था को हमारे को बनाए रखना है और पोस्ट ऑफिस का अवांछित तत्व, इसका दुरुपयोग नहीं करें, इसका ध्यान रखते हुए। हाँ, गोयल जी आ गए। मैं गोयल जी का जिक्र कर रहा था। गोयल जी ने मेरी भावनाओं को छेड़ा था, पुराने बात की, कबूतर की बात की, तो मुझे भी लगा कि आज ये क्या हो रहा है। और गोयल जी, मैं आप तो मेरे मित्र हैं, मैं आपके बड़े आदर करता हूं और आप भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का आदर करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन ये जहर कहना बंद कर दीजिए, जहर उगलना बंद कर दीजिए। जहर आपके अंदर में है, उसको आप बचाइए, लेकिन जहर मत घोलिए। आज देश में इतना अच्छा वातावरण है, आज पूरे विश्व में आज हमारे भारत की प्रशंसा हो रही है। मैं कई लोगों को कई लोगों को मिलता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। आज इस जगह इस हॉल में मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहता, मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं कि देश, विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा बड़ी है। आज जो भी मुझे फॉरेनर्स मिलते हैं, जो एनआरआई जो आके मुझे मिलते हैं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज में विश्व में हमारी भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है। अब पूरा जब विश्व हमारा सम्मान कर रहा है, हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे मोदी जी का आदरपूर्वक चरण छूने की प्रयास करते हैं, ऐसे समय में आप कम से कम, आप तो गुजरात के हैं, आप तो इस बात को ध्यान रखें कि मोदी जी कितना समर्पण से ये देश की सेवा कर रहे हैं। और आप बार बार जहर की बात करके, गोयल साहब, मैं आपका मित्र हूं और आपका भला चाहता हूं। आप ओपोजिशन आप इधर, तो मेरा कहना है, तो मेरा इसलिए कहना हो कि मैं इस पूरे सदन से ये उम्मीद करता हूं, आपसे आशा करता हूं, इस पूर्ण बहुमत से इस बिल को आप पास करेंगे। और इतना जो सुंदर बिल आया है, उन्होंने अधिकारियों ने जो मेहनत की है, अश्विन वैष्णव ने जो मेहनत की है और प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया है, इस बिल का आदर करते हुए इस बिल को 2-2 में पास करें। और यही मेरा निवेदन है। और मैं हमारे कांग्रेसी मित्रों को उनकी तेलंगाना की जीत की बधाई भी देता हूँ कि आप वहाँ जीते हैं। चिदम्बरम साहब का मैं आदर करता हूं, आपको भी बधाई। और मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी सीटें अगले चुनाव में इंप्रूव करें। आज 55 से 70-80 तक पहुंचे, लेकिन जिस तरह से आप ये जहर बोलने की बातें करते हैं, जिस तरह से आप विघटन बातें करते हैं, मुझे लगता है कि आप 55 से कहीं 27 में नहीं आ जाएं। आप जनता का आदर करना सीखें और जनता के जो उन्होंने निर्णय दिया है उसका आदर करें और देश के प्रधानमंत्री का भी आप आदर करें। और जो देश में अच्छा वातावरण बना हुआ है उसको जहर से उसको दूषित न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Dr. M. Thambidurai ji. Chairman sir, thank you very much for me giving the opportunity to participate in the discussion on the bill brought by Honorable Minister regarding the Postal Services Act. Sir, it is many members spoke about the history of the postal system, how it developed in India from 1766 onwards.
East India Company when they started. Then afterwards, in 1854, how the act it came. Then after independence, how it served for the whole human, our Indian people. Sir, this is very important service which requires for the rural people especially. Modern days nowadays, we are having so many systems for delivering our goods or letters and everything. At the same time, but still rural areas, we are depending on the postal department. Without that, we cannot do it. The postal department, according to the minister, not only serving the letters, Honorable Prime Minister's program also regarding giving the help for the poor people, bank accounts, everything, financial transaction also, the bank is going to do that. It's very essential. Therefore, the postal, even though so many private people have come in courier service, still we are proud of that the postal department as serving for the common man, especially not only delivering, as I said, other activities also, which very essential thing. So regarding, sir, I want to make one important thing to the Honorable Minister. Most of the post offices still has the old building. It is not at all fit enough to have, sir, Honorable Minister, sir, I want to, sir, Minister, sir, yes, sir, I want to make an important suggestion, especially regarding the buildings which the post offices is still having is an old building. It is not at all good condition. We have to modern days how we developed our system. We need a good atmosphere, and the office must be the proper way. That is not having. Second thing, the rural areas, we have to give employment opportunities for those people through postal department. That has to be taken seriously. Because of courier system, what is happening? They are the competitors. Because postal department lose the income. But if you are modernized and quick delivery system you make, it is more profitable. For example, speed post we are telling, it's not a speed post. Even if you put a speed post, it takes 1 week or 10 days, that is happening there. Therefore, these are things where people are facing because you are so many legal memories are there. Postal department, this sending letters or any confidence thing, it also requires for our legal system also. That is the authenticate thing what the letters were sending. And also, secondly, regarding that privacy thing, whatever democracy is, what everybody said, interception of the postal things for some kind of emergency thing or democratic system, and security thing, whatever the minister said. Sir, that may be there, I accept that there may be fact also. At the same time, you have the confidential thing also, because one person is writing a letter, you cannot intercept such kind of letters. There may be so many things, but his views we are expressing to others means that is, there is no using the emergency thing. You cannot interpret that. That is not a fair. That is my important telling, sir. Therefore, what I am requesting once again, our honorable, because I don't want to make much of the time, because the postal is our great thing. It's still our India has a good prestige. During the Prime Minister period also, so many reforms that took place. I am appreciating that. At the same time, what I requested, Honorable Minister, to see that give the employment opportunity to rural area people to serve there, and also modernize their buildings also, office also. These are things I am expressing. With these words, I am ADMK Party, I am speaking. Thank you, sir. Honorable Shri Santosh Kumar P. Thank you, Vice Chairman. Sir, I am so delighted on reading the name of this bill. That is the Post Office Bill 2023. The Honorable Minister did not attempt to change the name into Hindi. He could have done it, I mean, like this Gadishakti Vidyalaya or Nyaya Samhita. So I am so thankful to him for retaining this English name, which is understandable to each and every Indian. Now, let me add a few more points. Sir, all initiatives to modernize the post office system, which is the largest in the world, is welcome, no doubt at all. But we are not in a position to support this bill in the existing form, especially with the provisions of Section 9 and its subclauses. This Section 9 and its subclauses will turn our post office into Pegasus offices.
That is the most important point which I would like to raise. Why you link each and every aspect of life, each and every institution with the security of the nation? The security of interest of the security of the nation is a concept which can be misused, and the government has misused it many times. So please leave these poor post offices from the scope of this operation of this concept. So I would like to request the minister to delete this particular provision. Secondly, sir, to modernize the post office system, the postal system, we have to think about the unused postal land also. This department is having acres of land in various parts of the country. For example, if I say in Cochin, they have more than 1 acre of land which is unused. So there must be provisions and plans to make use of this unused postal land. And thirdly, what about the private players in this field? The India Post is having just 15% of this business in this industry, in this area. Just 15%. Others are in the hand, remaining 85% is in the hands of private players. So, do you have anything to control these private players? You are, if you are going to implement this Section 9, then it will be the secrecy has no value, privacy has no value. Then obviously, these customers will move towards private players. So there must be something to control the private players also. So even though we are in favor of modernizing our postal system, this network, we have to take into account all these concerns. And as far as the postal workers are concerned, sir, more than 90,000 posts are still vacant. So you have to take steps to fill up these vacancies as early as possible. Moreover, the wages of these grassroots level workers must be enhanced. And these are the points which I would like to raise, and I hope the minister will take care of these things. Thank you. Honorable Dr. Anil Sukhdevra Bode. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने जो एक अच्छा काम किया है, इसमें महत्वपूर्ण है कि जो गुलामी की मानसिकता थी, वो पूरी गुलामी की मानसिकता बदलने का काम किया। यानी वो अमृत पथ रहे, सुभाष चंद्र जी बोस की